All right, clap. Boom, here we go, guys. So now we are back with a new episode, new setup as you can see, and new guests. Our last podcast that we did with the Hillside boys was very, very popular. It had the maximum views on YouTube. Still very modest, but still a milestone for us. I think it was around 500 to 600 views, right? Yeah. Yes? तूने देखा David वापस से? I'm the greatest. So David is also in the background, guys, and let me introduce you quickly to our guest for today's podcast. We have Gogoi over here. तेरा पहला नाम क्या है? Prakamya. Okay, forget about it. Charlie. Gogoi सही है. AKA Charlie. And then we have, I think he is very famous in India right now, Manish Mahanta, one of the MFN fighter. Great to have you guys here. And obviously we have our editor, production guy, half part of my podcast, Mr. Joe Salladi. Hello everyone. Or you guys can just call him Salad. That's what he goes by. So, guys, great to have you guys in Delhi. What are you doing here? We're here for a wrestling, more of BJJ wrestling camp in Rebel, because I wanted to work on a few things, and yeah. So, how is it going? How do you feel it's been till now? It's going great actually. Like I'm getting to learn a lot of things. But यहाँ का मसाला बहुत है खाना daily पेट खराब है. Not supporting it. Welcome to the real North India, guys. Delhi Gurgaon ka khana. Everyone has at least like one upset stomach when they come here. Oh, we all have an upset stomach. 3 of us are just like, Manish, तेरा? Can't find the proper non-veg place. Proper non क्या बात कर रहा है? Like मिलता नहीं है Tuesday तो कहीं भी नहीं. नहीं. उस दिन स्कूटी लेके घूम रहा था भाई मिलेगा नॉनवेज आज तो कहीं नहीं मिलेगा क्यों ट्यूसडे. हाँ हरियाणा में I guess it's a little bit more stricter. ज़्यादा लोग वेज है लेकिन I think online हर जगह Swiggy Zomato. It's the savior, the online ordering system. मैं बहुत ही ज़्यादा addicted था यार पिछले साल तक. And then New Year's resolution मैंने लिया था इस बार Instagram पे भी पोस्ट किया था कि आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी जोमेटो. इतना ज़्यादा खर्च हो जाता था ना उससे खाने से बाहर से, और एक गंदा आदत बन गया था कि इवन इफ आई हैड द लाइक लेट्स से डिनर इन द नाइट बाय 10-11 आई वुड लाइक बी क्रेविंग टू ऑर्डर अगेन, और हाथ अपने आप वो जो जब फोन खोलते हैं अनलॉक करते हैं. कोविड में भी हुआ था मेरे साथ. अचानक से जोमेटो खुला होता था मेरे सामने. अरे मैं इंस्टाग्राम जा रहा था और इंस्टाग्राम पे जाओ कुछ खाने वाला दिख गया, अरे आइसक्रीम चाहिए अब. एक बार माय मॉम सेंस में हमारा फैमिली का बिजनेस है ना तो सारे बैलेंस शीट्स वहां जाते हैं. तो मैंने माय मॉम्स लाइक कोविड के टाइम तूने 25,000 खर्च किए खाने. लाइक लोग मर रहे हैं, वी नीड यू नो इमोशनली. That's true यार. 25-30 हज़ार तो मतलब कहीं नहीं गया. हाँ तब मेरे को भी लगा कुछ ज्यादा ही हो रहा है. आई नीड टू फकिंग सेव मनी. और उसमें कुछ ऐसा रिपोर्ट तेरा बताता भी नहीं है ना, लाइक जोमेटो शुड पब्लिश एटलीस्ट मंथली रिपोर्ट कि भाई इतना खर्चा कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के करो, बट दे फकिंग लव योर मनी. सो no bro, I'll cry if they show me that, please. so many people will go into guilt आस्क trip. हिज मंथ डे का बजट वहां पे खाने में कितना खर्च कर रहा था. 1000 तो करते. 1000 ही स्पेंड. कहाँ पर? नेपाल में? नहीं शिलोंग में. गुवाहाटी. गुवाहाटी. इज लाइक दिल्ली का खाना सही है, सस्ता है. सस्ता तो है यहाँ पे थोड़ा सा. स्ट्रीट फूड्स बहुत है हाँ. ऑप्शंस बहुत. कहाँ घूमा तू दिल्ली में? अभी तक तो इस हफ्ता में तो हम लोग पालिका बाजार गया था. पालिका नहीं सरोजिनी गया था. सरोजनी मार्केट. तो ट्रेनिंग के वजह से टाइम तो इतना मिला नहीं अभी तक. हाँ संडे सैटरडे देखते हैं. ठीक है. संडे कब निकल रहे हो तुम लोग ऐसा? वी हैव फ्लाइट संडे Monday morning को. अच्छा Monday मंडे morning. मॉर्निंग. सो संडे तुम लोगों का पूरा फ्री है. हाँ. गुड. सो सरोजनी मार्केट से क्या खरीदारी किया? मोस्टली तो लड़कियों का ही देखा. हाँ इट्स मेनली अ गर्ल्स मार्केट. एंड द गाइस वही दे कम सारा- आफ्टर यू नो परफ्यूम लेके. हाँ. भाई ट्राई करो ना. बहुत सारा सीधा बॉडी में परफ्यूम लगा ही जाएगा. हाँ पूरा कॉकटेल ऑफ परफ्यूम्स होगा. इतने लोग आके लगाते हैं. इधर से एक्स स्मेल हो रहा है, इधर से निविया. बीच में स्वेट का स्मेल. A completely new perfume for the fragrance for the perfume company. वही होता है पालिका जाके. मतलब डायरेक्टली कोई चीज पे देख नहीं सकते हो. देखा उसने अगर देख लिया शॉपकीपर ने छोड़ने वाला नहीं है. मतलब खरीदवा के ही मानता है. ओ भाई ये तो है. हैगलिंग वहाँ पे बहुत खतरनाक. और प्लस मैंने सुना है वहाँ पे बार्गेनिंग भी खतरनाक होता है. लाइक इफ यू गाइस गो दे विल नॉट. वो शुरुआत करेंगे 5,000 2,000 से, आते हैं सीधा 500. सीधा 10x ग्रोथ. सो यहाँ पे तुम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हो. यू गाइस केम हियर फॉर ट्रेनिंग.
you specifically you guys wanted to learn the scrimmage and the takedown defense because you guys are primarily strikers, right? Like mainly that's what you have been doing and you are very proficient as that. आज हमने जब sparring भी किया, not me personally, but David did wanted me to spar though. Peeyush, stop running, bro. We have to do that. You whoop my ass in BJJ all the time. Give me a shot, bro. That's the trick, bro. That's the trick. Never ever step in the MMA ring or MMA cage. During the MMA time, just start having some other schedule that you have. No, the day I was wondering, when was the last time you tapped in the gym? No, someone submitted you. Bro, it happens. It happens once in a while, especially when I'm working on the new stuff, right? Where I have to put myself in bad positions. And sometimes people even catch me, like legit, during some transition where I was slow or I was not paying attention. So hota hai, and I don't want to hold taps so sacred also. बहुत सारे coaches क्या करते हैं? They'll be like, oh, I've never been tapped in 7 years. Like literally मैंने सुना था एक बंदा मेरे को बोलता है, my coach has never tapped for last 9 years. Nobody has submitted him. So he is the greatest. मैंने कहा, that does not mean that you're the greatest. It's just that you are playing your A game. अब जैसे striking में if you want to learn something new, you'll have to experiment with that, right? So सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको. You'll find कि अच्छा इधर होल था, इधर ये था, प्रॉब्लम था इस मूव में. So you can't achieve all of that if you just keep playing your A game consistently. So striking कब शुरू किया या in general MMA कब शुरू किया तुम लोगों ने? So if we just start with you, मैंने MMA जर्नी स्टार्ट किया 2016 में. मेरा तब इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ तो मेरे को बोल रहे थे जॉब करने के लिए. मैंने बोला ठीक है, मैं जाऊँगा बेंगलोर. वहाँ में मैं क्या जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन वहाँ में जाके मैं सीधा वहाँ पे पास में जो MMA सर्च करके मेन गोल था कि MMA करना है. फिर जॉब्स नहीं कर रहा था. मेरे को बोला कि UPSC ये सब के लिए प्रिपेयर करो. बोला हाँ, मैं तो क्रैक करके रहूँगा. अभी तुरंत IPS बन के आ रहा हूँ. एक तो बुक खरीदा, वो अभी भी वहाँ में है, बेंगलोर में ही है. अच्छा, so तू भी बैंगलोर गया था. So I think we were around the same time in Bangalore, right? जब डेविड भी था. But I never met you there. उस समय कहाँ पे ट्रेन कर रहे थे? मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया फिटनेस टाइम ना. फिटनेस टाइम कोच लॉकलन थे वहाँ पे. जिजुत्सु मेरे को वहाँ पे फर्स्ट मिला एक्चुअली. मैं जिजुत्सु सीखने के लिए कुछ वहाँ पे नहीं, मेरा स्ट्राइकिंग में इंटरेस्ट था. राइट. वहाँ पे गया, लाइक लोग टैप कर रहे हैं. मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है. Gogoi. Tell them the story about who tapped you and why you actually got into jiu-jitsu. तो वहाँ पे मैं जब गया एक्चुअली इन लोग का फिटनेस टाइम में मैक्सिमम लोगों का फाइट कैंप चल रहा था. नेशनल्स ऐसा आ रहा था. सो आई हैड टू रोल विद संजना जॉर्ज. Oh, I know her. She's fighting against you. Yeah, फिर उसने मेरे को रिवर्स आर्मबार दिया. reverse sambar. हाँ, लग गया मेल ईगो में लग गया मेरा. हम रात सो नहीं. How can a girl tap me? Half my size. लेकिन वो almost तेरे size की है. Like she's big. लेकिन फिर भी मतलब I understand. But मतलब रात को मैं सो नहीं पाया. नेक्स्ट डे मैं कोच के पास गया. कोच मैं अपना 100% टाइम दूंगा. मतलब मेरे को ये सिचुएशन में किसी नहीं करना है. हाँ. So a girl motivated you enough to join jiu-jitsu. Yes. It's always a girl, right? और तेरा bro, how did you start? मैं तो स्टार्टिंग तो कराटे से किया था. because there was no MMA gym in our place. ये गुवाहाटी में ही. हाँ, गुवाहाटी में. so start हुआ MMA gym 2014 I guess. so मैं 15 में ज्वाइन किया और तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ. So karate में you became a black belt or something? No. I got the blue belt. Blue belt. और उसके बाद फिर you found an MMA gym? Yeah. So कौन सा MMA बिडांग MMA. बिदांग. गुवाहाटी में फर्स्ट आया था. तो कराटे में ज़्यादा कर नहीं सकता है. Only kicks. So mostly kicks. Right. So MMA में बहुत इंटरेस्ट है. सब कर सकता है कि इसका मतलब उठा के पटक सकता है. तो आ गया इसमें ज्वाइन किया अभी तक. So वो चीज़ तेरे को अट्रैक्ट किया क्योंकि यूजुअली स्ट्राइकर्स को लगता है कि यार वो ग्रैपलिंग वाला मेरे को करना नहीं है, ये बोरिंग पार्ट है. MMA ग्लोव्स बहुत अट्रैक्ट किया मुझे. छोटा ग्लोव्स मारने में मजा है उसमें. So he is just a fan of violence basically. इसको देखा मैक्सिमम वायलेंस किस स्पोर्ट में हो सकता है तो MMA में. Only inside the cage. Good. और उसके बाद फिर how has your journey been like जब शुरू किया था तब you had no ambition right ऐसा कि मेरे को एक दिन UFC में खेलना है या पता नहीं उस समय UFC के बारे में पता भी था कि तुम लोगों को. So how did you come to know कि MMA as a sport भी कुछ होता है और फिर UFC या ऐसा कुछ ambitions कब डेवलप हुआ? मतलब ऐसे YouTube में वीडियोस देख रहा था तब कॉनर मैकग्रेगर का जो बैक टू बैक नॉकआउट ये सब था. उसका स्टाइल अच्छा लगा मेरे को. लाइक हाँ.
So Connor motivated you. Connor हाँ, उसका स्ट्राइकिंग का स्टाइल मेरे को बहुत सुंदर लगता है. Nice. एंड मैंने स्ट्राइकिंग पहले से ही बचपन से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ यहाँ वहाँ कर रहा था. फिर मतलब क्लास 6 स्टैंडर्ड में हम लोग का स्कूल में एक वो कंफू टीचर आया था. बहुत सीरियसली मैं कर रहा था. ग्रीन बेल्ट तक भी गया, पता नहीं इसका क्या है. कंफू में तो कुछ ऐसा स्टाइल्स होता है ना कि स्पाइडर स्टाइल, मैंटिस काटा स्टाइल, वाटा ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे करके टाइगर स्टाइल. मतलब लेकिन कुछ सेंस नहीं था. मतलब क्या हुआ, हम लोग का एक इवेंट में बाहर में झगड़ा हुआ था. वो टीचर के साथ ही हुआ. जो लोकल लड़का लोग है वो नंसा को निकाला, उसका नंसा को लगी, उसको ही मारा. कुंफू टीचर ने? हाँ, कुंफू टीचर को मारा. अच्छा. और जो लोग ने मारा है उन लोग को मेरा दोस्ती पहले सील के रखा है. तो हम तभी समझ गए कि ये तो you understood कि कुंफू कितना legit है. नहीं, हम उसके बाद खुद ही मतलब अलग से वो बैग खरीद के. ब्रो लेकिन जब बड़ा हो रहा था ना तो ननचाक मेरे को इतना फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट लगता था. मुझे लगता था कि अगर इसको खरीद के बस रख लिया ना तो यू कैन हैंडल लाइक एनी स्ट्रीट फाइट एवर. और मैं लेजिट मैं उसको खरीद के घर लाया. मुझे घर पे डांट भी पड़ा कि भाई ये सब क्या कर रहा है. जाके से लड़ाई झगड़ा करना क्या. और ये नकल डस्टर everyone used to have that. है ना वो metallic knuckles. कि कभी लड़ाई हुआ बस ये पहन के जाना है and then I am just a superman. हर पंच नॉकआउट. So ये सब खतरनाक. और जब पहली बार एक्चुअली जब मैंने बोला ऐसे टेस्ट वेस्ट करने का कोशिश किया दीवार में, सारे लोग ना दीवार में मारने को समझते हैं कि नाउ आई हैव पंचिंग पावर, जब पता नहीं होता है तो कि डैमेज भी हो सकता है हाथ. So मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं. दीवार में मारा, मेरा ही कट गया अंदर क्योंकि मैंने कुछ पैडिंग वैडिंग किया नहीं था. डायरेक्ट नकल डस्टर पहना था. So that's the level of understanding which people have about fighting in general, right? उनको लगता है कि अरे हाँ मैं तो कार्डियो का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि फाइट में you can also get gassed out. वो मूवीज में दिखता है कि भाई अभी क्या MI देख क्या है ना कि भाई वो दौड़े जा देखता है कितना दौड़ता है टॉम क्रूज. उसका हर MI का एक क्लासिक सीन है कि he is running through a long stretch and you're just watching this guy running. बाइक चलाता है. बाइक तो ये सब बाद में आता है लेकिन उसके पहले उसका एक रनिंग वाला क्लासिक सीन है और एकदम परफेक्ट फॉर्म भी नहीं होता उसके रनिंग का. जो सबसे मेरे को नेहांश बता रहा था कि वो रनर रहा है काफी टाइम तक कि यू कांट हैव दिस स्ट्रेट अप पोस्चर because now you are facing more wind, you are facing more friction, so you have to like tilt a little bit forward and that carries you forward. और इसका टॉम क्रूज का रनिंग स्टाइल बहुत ही घटिया है. It's just like looking back trying to run. Bro, Steven Seagal's is way better. Steven Seagal is a legend. Steven Seagal बोलता है सारे MMA फाइटर्स को ये मूव मैंने सिखाया ना. जब भी कोई नॉकआउट करता है वो कहता है एंडरसन सिल्वा को तो ये मैंने सिखाया था फ्रंट किक उसका. And so many people used to think back in the 80s 90s कि Steven Seagal और Bruce Lee इन सारे की मूवीज में. Bruce Lee को कितना legit do you think? Like how legit was he for his time? For his time, he was like. For his time, he was, I think, he was legit, but अभी का तो. क्योंकि ब्रूस ली का जो फैंडम है ना मिक्स मार्शल आर्ट में, आई थिंक ही इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम इन मार्शल आर्ट इन जनरल. ट्रेडिशनल मार्शल राइट, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट. सारे लोग कहते हैं मेरे को ब्रूस ली बनना है. ब्रूस ली का पिक्चर्स होता है जिम में. सो दैट्स द वे यू शुड अवॉइड जिम्स. गो देयर, यू सी अ ब्रूस लीज पिक्चर, यू शुड बी लाइक ठीक है इसका इंस्ट्रक्टर अभी मेरे को कुछ ननचाक वाला चीज सिखाने वाला है. Imagine you go to a martial arts gym and the first thing that they sell you is nunchak. Bro, Gogoi, remember we went to that weird place in Bangalore. that cult, basically. हम लोग को मतलब पूछा हम लोग कहाँ से क्या कर रहे हो. हम लोग बोला मैं MMA फाइटर है. उसके बाद पहला पूछता है कि ब्रूस ली को पहचानते हो. हाँ देखा. मतलब लिटरली हो रहा है ये चीज. ठीक है. And क्या बोल रहा था? He actually said he's like, you know, we train for the streets. MMA does not work on the streets. What if somebody grabs your balls? And then he had a certificate out there that says purple belt from Tap Out. But Tap Out is like a company, right? It was a apparel company ना. UFC को शायद स्पॉन्सर करती थी. अलग सा था वहाँ पे. मतलब वो किड्स का मैट नहीं होता है कलरफुल. वहाँ पे था और सब लोग ब्लैक बेल्ट है वहाँ. सारे लोग सब लोग ब्लैक बेल्ट पहन के घूम रहे हैं. They practice nut shots. I think the first belt that they award is a black belt, right? उसके बाद नीचे कलर चेंज होता है. लास्ट में हम लोग का व्हाइट बेल्ट. उसके बाद सीखता है, पहले बेल्ट ले लेता है. जैसे जित्सु में कहते हैं ना कि once a white belt always a white, any time you are learning you should have that white belt mentality. उसमें भी वही कहते हैं लेकिन कहते हैं वो बेल्ट लास्ट में मिलेगा. Start with the black belt. Bro, their उनको जो घी था ना वो कैमोफ्लेज था. ठीक है. Oh shit.
फिर वो बोल रहे हम How लोग do you see them? and then वो बोल रहा था do you do conditioning? बोला हाँ करता है. No, do you condition your Mind, head. no balls basically. Groin conditioning enters the chat. So he showed us a video where his students were holding up and they're kicking their balls. Like Bro, the वो groin. शाओलिन मॉम का एक बड़ा पॉपुलर हुआ था ना वीडियो जिसमें आयरन एग टेक्निक कहते हैं Oh, उसको. I think those people just have no balls. They just show कि but still it would hurt. It doesn't work. I think it still hurt. Yeah, I don't know. जॉनी इंग्लिश में मिस्टर बिन का हाँ मूवी. bro, Johnny English legit movie. Holy shit, what a trip. Johnny English 2 भी आया था ना शायद Reborn ऐसा कुछ. Mr. Bean. Mr. Bean देखते थे बचपन में? हाँ ज़्यादातर मैं डेक्स्टर्स लैब, पावरपफ गर्ल्स, शुगर स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस. Powerpuff Girls actually funny था यार, मतलब funny नहीं entertaining था let's I say. watched those. Cartoon Network पे मतलब ये सारे क्लासिक स्कूबी डूबी डू. स्वॉट कैट्स. मेरा फेवरेट हुआ करता था स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स. हाँ लेकिन उसका हिंदी वर्जन जब मैं सुनता था ना उसका जो टाइटल सॉन्ग था समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर. उसका जब इंग्लिश में सुना बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगा, मुझे लगा क्या मजाक मार रखा है यार हिंदी में. अगर आप कोई भी कार्टून अभी देखोगे ना इंग्लिश में, यू विल रियलाइज इंग्लिश इज प्रीटी सोफिस्टिकेटेड, हिंदी वाज ऑल इंग्लिश में तो हिंदी में जस्ट कॉमिकली फनी करता है. आई थिंक द गाय हु डब्ड इट आल्सो वे बैक इन 1990s, वो डोरेमोन का आवाज सेम होता था, निंजा हथौड़ी वाले में आवाज सेम होता था, तो सेम बंदा बैठ के कार्टून देख रहा होता था क्योंकि डब करना है. एक चीज डबिंग का लेकिन मेरे को बड़ा क्रेजी लगता है ना कि दे समहाउ गेट द लिप सिंकिंग राइट. लाइक जब भी वॉइस निकलता है यूजुअली द अदर पर्सनस माउथ इज आल्सो मूविंग इन द सेम वे. अगर तू कुछ भी रैंडम अगर उसके ऊपर बोल देगा ना एंड इफ द अदर पर्सनस माउथ इज नॉट मैचिंग इट सो इट फील वेरी वियर्ड. बट दिस इज द स्किल आई थिंक दैट दे हैव कि जब भी वो ऐसा वर्ड चुनते हैं जो कि उसके मुंह के शेप को लाइक उसी के जैसा बनता है. You mean like those old kung fu movies that's dubbed in English? वो तो और भी खतरनाक. उसमें पता नहीं किस बंदे को पकड़ के सबसे कॉमिकल नॉर्थ ईस्टर्न वॉइस को लेके ये कुंग फू हसल देखा था. कैसा लगा था जब पहली बार देखा था? उस समय मार्शल आर्ट्स लगता था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं होता कि कोई फूक फूक के उड़ा रहा है, कोई अपनी वोकल कॉर्ड से मार रहा है किसी को. द लाफिंग बुद्धा कौन सा मूव था वो? 5 fingers of death. 5 fingers. ये यहाँ पे नहीं सिखाते रेबल पे. Just stop. Force field. Interestingly अभी भी लोग इतना बिलीव करते हैं ब्रो इसमें. Like मेरा एक फ्रेंड है, अभी मैं कजाकिस्तान गया था तो वहाँ पे मिला था उससे. तो वो मेरे को सिर्फ इंडियन मीम्स, ऐसे मीम्स भी नहीं, इंडियन मार्शल आर्ट्स वाले बुलशिट कोच मेरे को भेजता रहता है. बोलता है ब्रदर आर यू डूइंग दिस इन इंडिया राइट नाउ? मैंने कहा भाई मेरे को पता भी नहीं कहाँ सिखा रहे हैं ये सब. एंड मैक्सिमम इट इज फ्रॉम द साउथ. कहीं भी तमिलनाडु केरला के किसी गाँव से वो लोग सिखाए जा रहे हैं. एक वीडियो था बड़ा मस्त, उसमें एक बंदे को लेता है, उसका हाथ ऐसे मोड़ देता है घूम के, फिर एक दूसरे बंदे को बुलाता है, उसका भी हाथ घुमा के उसी में जोड़ देता है, फिर एक तीसरे बंदे को बुलाता है, तीनों का हाथ आपस में ही इंटरलॉक कर देता है. कहता है नाउ आई एम कंट्रोलिंग ऑल 3 people. I've seen a few of those videos on McDojo, right? On Instagram. McDojo life, that's the place to be. So उसके बाद फिर how did you come in contact with Hillside MMA? कैसे शुरू किया Hillside? Hillside वही लॉकडाउन का टाइम. So we both were actually planning to go to Thailand to train. So you both met, you and David met in Bangalore. हाँ. At the same gym at Lachlan's, right? हाँ, Lachlan. उसके बाद we had our own team, Gado MMA. Gado MMA, right? But then Who owned that team? Lachlan owned it? Okay. Lachlan. But once वो चला गया, टीम भी टूट गया. फिर हम लोग लॉकडाउन में आए and then we thought like क्या 1-2 महीना होगा, next we'll go back to Bangalore. जो कर रहे थे वही करेंगे. फिर बढ़ता गया, थोड़ा टेंशन भी होने लगा लाइफ का, क्या करेगा नहीं, घर में भी गाली खा रहा है. तो हम इसको किया, मतलब इसको भी कॉल किया कि तुम भी गाली खा रहे क्या. मतलब कि बोला कुछ ना कुछ हम लोग करना पड़ेगा. हम लोग वही लाइक वी सॉ लाइक स्मॉल सेटअप, लेट्स से पीटीज ओनली, ऐसा करके कुछ, और मे बी लाइक स्मॉल टीम, ऐसे वैसा हम लोग का विजन था. बट देन लाइक
So how did you get people to come to you guys? Like कोई जानता था तुमको पहले से गुवाहाटी में जो आगे साथ में ट्रेन कर रहा था या मेरा एक दोस्त आया था समीरन गोगोई बोल के. अच्छा. So- मैं हमेशा तेरे नाम को उसके नाम के साथ कंफ्यूज करता हूँ. मुझे लगता था हमेशा कि तेरा नाम है समीरन आगे. गोगोई. हाँ. तो पहले समीरन आया, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे. वो मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ ही नहीं, तो वो आया था, ट्रेनिंग कर रहे थे. कर्फ्यू भी था ना 4 बजे से ऐसे करके. फिर वो मनीष को लाया. देन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते गया. स्टार्टेड ट्रेनिंग. बाकी लोग भी तभी मतलब इंक्वायरी करने लगे. when you see like a group of people training तो आपको भी मन होता है कि हाँ क्या हो रहा है, चलो चेक करो. Like I think वो first few people collect करना ना, that's a major challenge for any jiu-jitsu gym, or MMA gym, especially when you are starting from the scratch. Yeah. And in a place like Guwahati जहाँ पे वैसे भी उतना martial arts का exposure नहीं है, एक या दो gym से जो करवा रहे थे. So that's great on your guys' part, and I've seen like some of good talented guys who have been coming out from your gym. David obviously has led the path in MMA and grappling for you guys. But have you started fighting as well? Yeah, like अभी लास्ट मार्च को ही मैंने मेरा प्रो डेब्यू किया था WFC में. Right. How did that go? Now I'm just hoping for more fights. देखते हैं क्या होता है. कैसा था तेरा pro debut? Tiring. It was 5 minutes, right? 5 3 से minutes 5 का switch. तो मतलब एक था कि 3 मिनट में खत्म होता था, ऐसा क्यों नहीं. मतलब खेल रहा हूँ, टाइम खत्म ही नहीं होता है. और जो ओपोनेंट था वो भी नहीं थक रहा है. लास्ट में जब हम उसका माउंट में गया, हम उसको पूछा थकान नहीं हो रहा क्या. Literally पूछा तो ये. हाँ हो रहा है. ठीक है चलो. प्यार से बात कर रहा था मार के. और एक एल्बो दिया, तुमको वो थकान नहीं हो रहा है कैसे. हाँ हो रहा है, तुम मार क्यों रहे हो. पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है इनका. बेचारा माउंट से पिट रहा है, ऊपर से ट्रैश टॉक भी. तो इसलिए मेरे को निक डियाज इतना पसंद था. वो इतना ट्रैश टॉक करता था और साथ में मारते तो बिता दे रहे को 1-2 स्टॉकटन स्लैप अबे कहेगा और ज़्यादा तेज बन रहा था. ब्रो आपका कैसे शुरू हुआ जर्नी? आई मीन जर्नी नहीं, लाइक आगे कैसे बढ़ा? मैंने गुवाहाटी पे कंटिन्यू किया MMA फॉर लाइक 4-5 इयर्स. फिर मुझे लगा थोड़ा और ट्राई करता हूँ दूसरा जगह पे, तो मैंने बेंगलोर आया. बेंगलोर पे अलग अलग जिम पे ट्राई किया. कोई कॉम्बेट में भी गया, वहाँ पे बहुत सारा दोस्त बना. समीरन को भी मैंने वहाँ पे मिला. फिर तो लॉकडाउन आ गया, घर वापस. फिर घर में लॉकडाउन में क्या नॉर्मल क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर रहा था. मालूम नहीं था ये भी पास में रहता था मेरा. अच्छा. तो समीरन मुझे बताया एक हिलसाइड खोल रहे जिम मेरा दोस्त. तो मैंने बोला लोकेशन भेजो. जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस. अरे वाह, ये तो टहलते हुए पहुंच जाता है शाम में. इधर ही तो आई वाज स्मोकिंग ऑल द टाइम. तो फर्स्ट डे ये मैं और समीरन स्टार्ट किया ट्रेनिंग. सो वी कंटिन्यूड एंड अच्छा, so you are the first day batch Yeah. of Hillside. David missing था. अपने ही जिम के inauguration में missing. I had some personal issues. I had to be somewhere else. अच्छा. I was out of town. गलत दिन शुरू कर दिया यार. इसका कैलेंडर चेक करना चाहिए था पहले. तो कंटिन्यू किया. अभी बहुत बढ़ गया है हिलसाइड, तो बढ़िया है. अभी बहुत ट्रेनिंग पार्टनर से इंटरेस्टेड आदमी है बहुत आसपास. सो सब आ रहा है अभी. इट्स गोइंग गुड. तेरे बारे में मैंने सुना था MFN में जब तूने compete किया था, but I didn't know you personally. I think we met at Strangle Guwahati, Yeah. जिसमें तूने compete भी किया था. And I was really impressed. उसके पहले जिस दिन हम पहले बार पहुंचे थे, I got to roll with him also. So I was really impressed with his athleticism in general and being a strong guy, everything, right? Technique भी baseline सही था. So I liked all of that. So yeah, I am looking that you have a very successful career in MFN in future. In MMA in general. क्योंकि तेरा striking इतना अच्छा है, तुम दोनों का ये striking इतना अच्छा है. If you just improve your grappling and take it to that next level, there will be very few people who will be able to stand with you or even go down on the mats with you. Right? So great job coming here deciding. And मैं ये सबको बोलता हूँ like Indian community में कि if you do not have that kind of training nearby you, go and seek it out. क्योंकि unless you travel, unless you move around, you can't get to learn new things also. So ये मेरा भी personal goal है, hopefully down this year, later down, कि I go around into different gyms, maybe do a seminar, maybe teach and train with them. So that's always a good place to be in. Anything you got for us, Joe, that you want to interject with? A question. Questions, whatever you want. So, you guys have in-ring experience. How many matches have you guys had? I had amateur around 26, the win and loss.
अच्छा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल क्वेश्चन है फॉर आवर ओन फाइटर्स हाउ मेनी amateur fights do you think one should do before turning pro and I think a lot of people who are doing MMA who are amateurs want to know the answer to this. What is the right number? It's not the numbers, it's the quality of the fight. Right. हर फाइट से अलग अलग सीखने को मिलता है. अगर if I finish the fight in like first 1 minute, I don't get to learn much from that fight. अगर 3 minutes का fight खेला वो बहुत experience हुआ. हारने से भी I get to learn a lot. वो मैच टाइम इम्पोर्टेंट होता है ना कि यू आर देयर इनसाइड यू आर फीलिंग नॉर्मल. थर्ड राउंड तक पुश करने से कैसा लगता है. Right. नहीं तो अगर सपोज आई हैव लाइक 50 फाइट्स सब जीता बोले मैं, लेकिन बिगिनर को हम फेल रहे हैं. राइट. कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. लाइक फाइट समवन लेजेंड आफ्टर दैट आई विल प्रोबब्ली लूज. Yeah. वही मतलब Amateur is all about learning, explore yourself, like your skills and all. So try करो सब जितना. हारने से मैटर नहीं करता. रिकॉर्ड तो amateur record doesn't काउंट नहीं होता. matter. एग्जैक्टली. यही सेम बात I'll come to you. यही सेम बात मेरे को दिविज ने ही बोला था. आई वाज देयर पास्ट मंथ विद डेविड आल्सो देयर. सो वहाँ पे मैंने भी उससे पूछा कि amateur में हाउ मेनी फाइट्स. तो उसका कहना था कि 20 फाइट इज गुड इनफ बट इन दोज 20 फाइट्स यू शुड एज यू सेड कीप पुशिंग योरसेल्फ बिकॉज amateur record does not count for anything. It's just like you are going into a glorified sparring session where people are coming to finish you and you have to like hold yourself or test out your game कि कैसा चल रहा है. Yes, David. So the main thing is when you start off, right, like people talk about the numbers, it's the quality. And if you look back at your fights, right, like if I look back at the fights, my first few fights, I look like shit. Like you'll always agree. So you're always improving. And also I think you should have fair matchups. There are a lot of times people with like let's say 20 fights is fighting a guy who has 1 fight experience. Right. And that's not fair. So वो amateur में पैड करके क्या करोगे. रिकॉर्ड करना भी है तो जाओ प्रो में करो कहीं कुछ फायदा होगा. लेकिन बहुत सारे लोग होता है जो वही करता है. Some guy who's had 2-3 fights, you have 20 fights, you're beating him up. I mean, that's just bullying, right? At the same Right. point. But it's not their fault. I mean, they're put in that situation where they have to fight each Amateur में can you control कि who you're fighting? You can't, right? Because tournaments से सब करते other. हो. So in the beginning, like when it first started, it was just tournaments. But now, like more promotions are doing single fights. Right. ये ACS है उसमें क्या होता है? उसमें भी टूर्नामेंट होता उसमें है. records लेता है. तुम्हारा amateur records कितना है उस हिसाब से match up They will कराता है. match you up. तो That's good. I like the match up for ACS. Have you fought in ACS? Yeah, 2 times. And how was the experience? Great. A single fight and the opponents are like up to your level. So Right. I won once and I lost the other one. So it But was you great have experience. great experience, Yeah. right? From those fights, exactly. So for someone who is on your level, I think that's the most important factor. How many quality fights, as you put it, are important to have an amateur? तेरा पूरा क्वेश्चन क्या था? I forgot. Means for our beginner and hobbyist audience, with all your in-ring experience, what are some quirks or some advice you can give them, or certain perspectives जो उनको पता ही नहीं है, जो in-ring के अंदर ही आता है, that you'd like to share? जो रिंग के अंदर ही आता है. जो आपको पता है, जो हम नहीं देख सकते, because we have not, you know. मतलब जो फाइट करता भी नहीं है, like let's say कि he is just a avid MMA fan जो कि देखता है या just sport को follow करता है. It's not interested in learning or like just interested in the sport. Yes. Tell us some perspective जो ring के अंदर होता है, something that you've noticed, something that you've जो रिंग के अंदर ही जाके पता चलता है. You can't get it from the वो outside. रश, एड्रेनालाइन रश जो वो दूसरे में फील नहीं होगा. और डंप भी तो होता है. हाँ. एड्रेनलिन डंप भी तो होगा फिर. हाँ वो भी होता है. मतलब फाइट का पहले हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं, मेरे को टेक्निकल जॉब ही करना था शायद से. लेकिन वंस आई एंटर एंड स्टार्ट बॉडी वार्म अप हो जाता है, डर निकल जाता है. लाइक आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट. तब लगता है हाँ नहीं ठीक ही है, अच्छा लग रहा है. When do you enjoy it? When you enter the cage या उसके पहले ही you are out of the fear? When I start, like हम केज में वॉक करता है, like your hands, your legs feel so heavy. Like And slow. why do I feel Mom so spaghetti. weak? My knees are weak. But then उसके बाद एक तो like when you start body थोड़ा warm up हो जाता है, हाँ. 1-2 shots लेते हो, like हाँ मैंने तो ये पहले बहुत बार किया है, and you get comfortable. Right. I think वो fight और flight response होता है, right? कि शुरुआत में इतना डर लगता है कि you don't want to be there, but once you're inside, same I think grappling situation में भी होता है, लेकिन MMA में काफी amplified होता है same चीज. yeah, MMA is way more amplified. And to all promoters, and please have a washroom next to the dressing room because we use that a lot before we fight. Washroom का मैंने बहुत complaints सुना है कि the washrooms are the most wackiest place in these MMA promotions generally. So you interestingly have also experienced the kind of
welcome or hospitality that a pro promotion does, like a high level promotion in MFN. Yeah. So how was that experience, if you can tell us? Yeah, it was the best experience till now. Definitely MMA is the biggest promotion. So they're doing a great job and everything's great. Like can't complain about anything. So they take good care of your fighters and cornerments and all everything. So it's good. So let's just explain it to our audience. जैसे कि you won, I think, the MFN contenders. Yeah. जो nationals होता था आईमा का, that you won, right? Yeah. कितने fights किए थे उसमें? 6 fights 6 fights in 3 days. 3 days. Yeah. Holy shit. No. How many knockouts? 3 or 4 I guess. 4 knockouts. Maybe. First round, second round. First round only. Damn, bro. Oh. That's some sick performance. क्या मतलब उस दिन were you feeling like yeah, it's my day, या you were just very well prepared? क्या था उस दिन? नहीं, usually league है तो first fight एक बार जब खेल लिया I got used to the case. Right. So I'm very comfortable. So that's why striking पूरा खोल सका. अच्छा लगा. Nice experience, good experience. So what I want to know, what हाँ complete करो. जब लीग से 3 दिन का लीग MMA so you get a lot of injuries. Right. MMA का लीग it's not easy. It's not easy. Like जब UFC जब शुरू हुआ था तो एक दिन में वो जो UFC टूर्नामेंट होता था 3 से 4 फाइट्स Yeah. होता था. And if you get injured in the first fight, I remember पहले जापान में भी जो ये प्राइड और ये सब जो होता था उसमें जो टूर्नामेंट्स करवाते थे उसमें एक बंदा था यूरी नकाई. I don't know if you guys have heard of it. He was a jiu-jitsu or a judo guy at that point of time. And उसका किसी giant से fight हुआ था क्योंकि weight class तो उस समय होता भी नहीं था. And that giant guy just threw a kick जिसमें कि उसका toe उसके आँख में घुस गया. और he lost his eye during that fight. लेकिन उसके बाद भी he won that match, finished it with a toe hold or something, कोई submission, and then comes back to fight. Guess who in the finals? Hickson Gracie. Wow. Finals or semi-finals, but he matches up with Hickson Gracie. Hickson is like, bro, he can't see from one eye. Do you really want me to fight him? And Japanese guys are crazy, right? Like, उनका हाथ टूट जाएगा. अभी माइकी मुसुमेची के साथ किसी का नी पूरा घूम गया दूसरी तरफ, and they are still walking like nothing. चेहरे पे expression ही नहीं आता भाई लोगों के. So that's something like wild that you get to see in MMA. So talking about injuries, did you have any injury during that tournament? Yeah. By the final जब तक मैं पहुंचा my cauliflower ear was swelling Swollen. this much. So I had toe injury, I had a muscle pull here, I had knee injury. Damn. I was icing everything before the fight. Yeah, और दूसरे और तीसरे दिन feel भी होता है pain, right? Like in the match you won't feel it. I don't feel anything. लेकिन but तीसरे after दिन the you'll be fight, like, कैसे चलूँ? फिर भी contract चाहिए MFN का खेलना है भाई. Yeah, that's a crazy gauntlet that you guys went through, and again. He also fought. He broke his like this bone. अच्छा, you fought in contenders? Yeah. I didn't know that. तो Ask how it- first fight जीत गया first round ठीक है वो. Second round तो हम ही जीता लेकिन क्या हुआ मार के मतलब मेरा खुद का हाथ टूट गया. मार के. मतलब So क्या ground and pound कर रहा था? हाँ अच्छा. इसे मार के फिर ग्राउंड पाउंड किया फिर मतलब क्या हुआ जब ब्रेक दिया ना नॉट एबल टू मेक अ फिस्ट. मैं सोचा मतलब और एक स्टिंगिंग सेंसेशन था यहाँ पे मतलब जैसे कोई पिंच कर रहा है ऐसे करके. तो हम उसको बोला कुछ फंस गया है सर देखो. वो बोला नहीं तुम्हारा सर हाथ टूट गया. ओके तो उपाय नहीं है क्या करेगा. So then you pulled out. I had to pull out. ऐसा कुछ होता है कि you can take like a painkiller or something, or hand injuries are something that you can't fight with. So it was like completely broken. अच्छा. Bone was- Surgery करना पड़ा. Shit. So if he continued, Then he would have yeah, it would more have been damage, no? Smart play. he had the surgery. I think the next day. Next day, And how much time did it take you to recover? it took like 2 months. 2 months of 2 months, recovery. 1 month नहीं like it recovered but then ये like I couldn't make it fist properly. ऐसा हाथ फंस जाता था. What's the worst injuries that you guys have ever had in MMA in your career? जिसके लिए सबसे ज़्यादा longest time या सबसे painful ऐसा सबसे पेनफुल तो मुझे मसल पुल मिला है जो पेन है Ribs में? रिब्स में. अभी recently मिला क्या तेरे 2 बार मिला हुआ है दोनों pain से. भी आईमा आ- नेशनल में हुआ था मेरे अच्छा. फाइनल्स में. मुझे लगा कुछ बोन तो डेफिनेटली गया है रिब में लेकिन ये मसल पुल था. पेन बहुत दिन लास्ट किया. वर्स पेन. And then how did it heal? Did you do something या अपने आप चला गया? फिजियो Physio से. उससे. You David? MCL. How did you tear it? I was in training.
He looks. He looked. You didn't tap to it या दूसरे ने खींच दिया? So he had me in it, and then we were in the cage, and other guys were rolling as well. So someone just got slammed right next to us. Boom. So I turned and I looked back, and then my leg's gone. My MCL disappeared. Then I was just like, oh damn! I just heard pops, and I was like, shit. Nice magic trick. Bro, that's my biggest fear. और इसलिए जब भी मैं roll करता हूँ, I make sure कि everyone is at least like 6 feet away from me. Okay, I don't want to be chilling on the bottom of the car and some fucker just lands head on top of my head and crushes me. So वो और एक tree गिरने का ये am I completely एक वाला तो rational fear है, ये वाला irrational है. ट्री गिरी जाएगी. Bro, you're walking. मैं बैंगलोर में था ना, so बैंगलोर में पता ही है कि ट्रीज दोनों तरफ होते हैं रोड के, हर रोड के, और वो इतने पुराने ट्रीज लगते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि कब गिरे आएंगे. So I always had that fear walking on the road. भाई इधर से ये वाला गिरेगा, बचूंगा कि नहीं. Final destination has ruined life for us. Exactly, bro. That movie was traumatizing to say the least. उसके बाद लाइफ में कुछ भी ऐसा देखोगे ना, लगेगा कैन दिस किल मी. You have to watch out for it. ये एसी गिर गया तो एवरी टाइम गाड़ी से जब जाते हैं आगे का गाड़ी में पाइप्स होता है तो वी ऑल थिंक अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन. अभी निकला वो. Never stay behind one of those vehicles that carry pipes side में. ठीक है. Go for it. So what would you guys say is a good ratio between, या फिर आप लोग कैसे करते हो, between weights, cardio and then MMA skill training? वेट ट्रेनिंग करते हो तुम लोग? वेट ट्रेनिंग करते हैं. दिखाना भाई सब. बाइसेप वाला नहीं, बाइसेप में क्या काम है? शिट ब्रो, थोड़ा तो काम करता है, ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ. थोड़ा स्ट्रेंथ तो चाहिए. बाइसेप तेरे पास तो कुछ ज्यादा ही है. ट्राइसेप चाहिए. ट्राइसेप चाहिए. ट्राइसेप इज मोर वर्क. नो Tricep क्यों चाहिए? ट्राइसेप एंड शोल्डर. That's bigger muscle. बाइसेप इज स्मॉलर देन ट्राइसेप ना. बहुत लोग Bicep is for sure. बाइसेप इज फॉर शोर. बाइसेप इज फॉर doing this. वेट कट में तो मेरा कुछ प्रॉब्लम है नहीं. मैं नेचुरल वेट में खेलता हूँ, तो आई पूरा लाइक आई हैव मास गेनर एंड एवरीथिंग. तो अगर वेट कट करना, आई जस्ट स्टॉप मास गेनर. आई गिव वेट. Does the mass gainer actually help? I don't know, bro. No, Like mass gainer is a lie. Why are you still taking it? it's tasty. What I'm taking. Okay, Chocolate flavor अच्छा लगता है मतलब. that's a valid point. The Horlicks पी लिया करना. Horlicks या Bournvita वो पे. टेस्ट नहीं मिलता है. कौन सा मास गेनर वो जिसका टेस्ट इतना अच्छा? मैं पहले कोर बॉलिंग्स यूज करता था, अभी इनटू बोल के ऐसे कुछ. उसका टेस्ट बहुत अच्छा है. क्या काम दे रहा है पता नहीं चल रहा मेरे को. लेकिन टेस्ट अच्छा लगता है. I think मास गेनर वर्क नहीं कर रहा है. थोड़ा सा और दो मास गेनर एक साथ ले. मास इंक्रीजर. So हाँ, वेट Weights ट्रेनिंग versus और cardio. स्किल. हाँ, वेट्स कार्डियो ट्रेनिंग तो तुम लोग आई थिंक यू जस्ट डू यू वर्क अदर देन योर MMA ट्रेनिंग फॉर कार्डियो एनीथिंग? आउटडोर ट्रेनिंग, रनिंग. Okay, you go for running. Incline runnings and all. How many times a week? Outdoor Sunday Sunday go. or Saturday like. Nice. And how long is this patch that you run for? Hill के ऊपर चढ़ते हो या ऐसे ही? नहीं, depends. हर डे अलग अलग होता है. कभी incline sprints रखते हैं, कभी long distance running. So change करते हैं पैटर्न. Nice, that's good. I think अलग से cardio training is very very important for any kind of sport. पहले ना मेरे जित्सु के शुरुआत वाले करियर में ये चीज़ बहुत ही पॉपुलर था कि मार्सेलो गार्सिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर. उस समय तक गॉर्डन नहीं आया था. एंड मार्सेलो गार्सिया हमेशा कहता था कि आई नेवर डू कार्डियो. सो जब भी लोग टॉप पे होते हैं ना और वो कोई भी एडवाइस देते हैं तो जित्सु में सारे लोग उसको ऐसे लेके सीधा कप कर लेते हैं. सो एवरीवन वाज लाइक हाउ व्हाई शुड वी डू कार्डियो. और वैसे जित्सु वाले लोग तो लेजी होते ही हैं. दैट्स लाइक गिवन थिंग. सो व्हाई शुड वी डू एडिशनल कार्डियो व्हेन मार्सेलो डज नॉट नीड इट एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ऐसे एथलेटिक लोग रेसलर्स सब आने लगे एंड हु स्टार्ट टू एक्चुअली पुश द पेस, देन पीपल रियलाइज कि यू नीड more cardio. Now you know what you need. Yeah, I definitely learned a lesson in Goa. I dominated the Goa, first 2 rounds. The third round also, like I dominated, and towards the end, my cardio just gave in. Are you sure that was a cardio, not your lifestyle choices around Goa? My cardio is affected by my lifestyle choices. और एक चीज उसका क्वेश्चन का, like ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से स्लो हो जाता है. So you have to balance everything. Right. If you put on more muscles, you become slow. हाँ, punches का वो explosiveness. We can feel the difference in our striking. No, punches are getting slow. Right. Strength बढ़ता है, everything. wrestling and all help करता है, like वही. It is a give and take. कि अच्छा you need more strength or you need more mobility and all these things. So Speed. balance. And that's why boxers के arms वैसे because Shoulder they- especially.
Boxers you'll see they're super thin usually, like Floyd. That's why people, when you see guys with big arms, don't be scared. Big arm, big chest, all of these doesn't matter, guys. You will outrun that guy every day. I might not outrun, but I might do some jiu-jitsu. I think that's the solution if you can't run. हाँ, so मैंने भी cardio training हल्का फुल्का शुरू किया है. Ashamed to say that. हफ्ते में 1 या 2 दिन we try to go and do some running. Like एक बहुत ही बड़ा पार्क है यहाँ पे. You can just go around that trail. It's like 2 kilometers. So उसका 2, 3, 4 राउंड जितना भी तुम मार सकते हो. And that I feel is a really good workout for cardio. Another way of pushing your cardio I feel which is very underrated is when you are training, just push the pace. Yeah. Just make yourself tired voluntarily. क्योंकि बहुत लोग ना they are scared of getting tired, so they just keep avoiding it. और तेरे को दिखेगा राउंड में कि whenever people feel like they're getting tired, they will become super conservative. They'll not move at all. Now that is a good strategy if you are in a real fight and then you don't want to just gas out completely. But in training, sometimes you can just push yourself more, empty the tank as they say, right? Yeah. So that is something which is a very less practiced skill in our sport, in both MMA and BJJ. That's something that we can learn from. Yeah, speaking of gas tank, when you're in a match, what are techniques, tips, tricks you use to preserve your gas tank? Try to be efficient. Try to knock out your opponent. Any round में जीत जाओ. And not throw unnecessary stuff. Yeah. Just wait, calm. That's all. What about you, bro? How to preserve your cardio during a match? I like हम थोड़ा movements को limit करते हैं. Like when I started, I was like moving all the time, no? Like try to every shots that I land full power and all. इससे बहुत tiring होता है. But then I like started picking my shots and got like better. Especially when you miss a punch, right? Like Yeah. miss a shot. Yeah. जब empty shot जाता है, then you feel like more somehow gassed out. I don't know why is that thing. उसके पीछे कोई scientific reason है? कि when you after a certain experience ये नहीं होता है. नहीं एक होता। टाइम तक होता है. अच्छा। तब क्योंकि जब beginners है या amateurs में पूरा ताकत लगाते हैं पूरा starting में. They waste Right. their shots. Both of them get tired. Right. So by the time you experience, you learn. So then even if you miss a shot, you are okay. like because every shot is not powerful shot. It's no? not powerful We know shot. which one to be. Exactly. That is a very valid point that you are raising. Again, just to make it a little bit educational for people who are new to the sport or who are still at a beginner level. When you're fighting or when you're doing jiu-jitsu, whatever combat sport that you're doing, the less explosive you are every second of the match, the more cardio you will have, right? Yeah. Because if you are explosive every second, every shot is a power shot, One last you will see ki you'll blow your gas tank in like just one round. And it's so easy to like fight with someone who has like already exhausted all his cardio, right? It feels like you're fighting a baby. They can't move, they can't control themselves. You can just do whatever you want with them. Take That's your a- time and finish the match. Yeah, there's a terrifying feeling to be in. और ये चीज़ नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती. उनको लगता है कि आई कैन फाइट फॉर 30 minutes नॉन स्टॉप. बस 500 लोगों को ही तो मारना है. उसमें से 200-300 मैं फ्रंट किक और 300-400 स्पिनिंग बैक किक मारता हूँ अक्षय कुमार के जैसा. मेरे दोस्त बोलते हैं कोई लफड़ा होने वाला होता है. हाँ. मनीष तो MMA करते हैं 10 को फेल लेगा. हम लोग 3 संभाल लेंगे. Zero fitness. हम लोग 3 भी उसमें बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है. मनीष को 10 दे दिया बेचारा. ट्रेन है इसलिए. मनीष तो थोड़ा सा कर लेगा. भाई 3 कर रहा है तो 4 तो कर ही मैं लेगा. खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ टीम का. सो स्ट्रीट फाइट कभी हुआ है तेरे साथ? कितनी स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व है? तेरा पर्सनालिटी देख के लगता है पक्का हुआ है. मैं मतलब इतना एग्रेसिव नहीं हूँ. हाँ. जब स्टार्ट हो जाता है तो there's no जब step दोस्त back. वोस्त के साथ हो जाता है तो यू जंप इन. मेरा ही होता है ज्यादा. Tell us a story. बता कोई स्ट्रीट फाइट एक्सपीरियंस बता. What a once in a lockdown, so we are not allowed to go to other states, no? Interstates movement नहीं था, and Assam and Guwahati it's connected. So Assam and Guwahati. Meghalaya, sorry. Meghalaya. Assam and Meghalaya. So खाना पाड़ा था खाना border, पड़ा. right? Just a divider. That's Bro, the border इस line. बार अच्छे से मैंने प्रोनाउंस किया. खाना पाड़ा. सही बोला. Let's go. हाँ bro, sorry. So मेघालय पे एक जगह पे गया मतलब क्या? Just cross the divider. हाँ. So we're there. So some local guys came, like around 7-8. So I was with my girlfriend and like 2 more guys, like that. So they came and
क्या कर रहा है यहाँ पे. अच्छा, they were trying to moral police you. Yeah, like that. So started pushing me, slapped my friend, and started launching my hooks and all. Knock, all knocked out. Because I was surprised. Wow, MMA is working. So पहली बार उसका रिजल्ट सामने आया और गर्लफ्रेंड के सामने हीरो ही बन गया. बोथ. So that's a good. तेरे साथ तू कभी किया है स्ट्रीट फाइट? हुआ है. Okay, कॉलेज में तो बहुत हुआ है. So Gogoi is a regular at street fights till now, sadly. कौन सा वाला But बोलेगा? tell the New Year story. The New Year one was nice. हाँ, न्यू ईयर वन हम लोग जिम के लड़के लोग चिल कर रहे थे न्यू ईयर में, बॉनफायर एंड ऑल. कहाँ? वही अपने प्रेमाइस में? हाँ, वहाँ पे. फिर रात को इन लोग बोला ऐसे जाते हैं बाहर में, कोई लोग को स्मोक करा था ऐसे करके. और मेरे को मतलब तो आइसक्रीम खाना था. पास में गए मार्ट में, निकले. फिर 2 लड़का आया ना, बॉडी है ऐसा वो भी नहीं, मतलब पतला लड़का होगा, ऐसे आ रहा है. ऐसे अभिजीत को ऐसे धक्का दे दिया. Wrong guy. रॉन्ग गाय. वो भी अभिजीत. मैं थोड़ा दूर में था. अभिजीत को देखा ऐसे रहा था. नहीं चलो कुछ नहीं होगा, जाता है. फिर थोड़ा हम लोग का ऐसे बहस कुछ हुआ, हम छोड़ो जाएगा. फिर इमीडिएटली लाइक रुको मैं अभी कॉल करता हूँ. ये उस बंदे ने बोला? हाँ, उस बंदे ने बोला. मैं भी वहाँ का था, कॉल करो ना, हम देख ले. हम सोचा कोई पहचान गया होगा. हाँ. फिर कॉल किया, हम लोग सोचा रुकते हैं कि क्या कर रहा है, बोर भी लग रहा है. फिर घूमा लाइक विदिन 2 मिनट्स. वहाँ से यहाँ पे 3 या 2 थे, अचानक से और 6-7 लड़के लोग आ गए. And how many people were you? 4. वहाँ से एक तो लड़ेगा नहीं, पता था बिगिनर है. Okay, आज के क्लास के लिए मैं बस डेमोन्स्ट्रेट मैं बस देखूंगा. सोचा था चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या होगा. हम लोग का कॉम्प्रोमाइज का कुछ था ही नहीं. एक लड़का आया, आके सीधा अभिजीत को पंच किया. मैं सोचा ठीक है, मैंने भी बूट्स पहना हुआ था. पाम सब लोग गया मारा. फिर वही में बीच में एक लड़का शर्ट खोला, लड़ेगा क्या, हम उसको एक एल्बो मारा. फिर से शर्ट पहन लिया. मैं बोलता इतना दूर से क्यों मारा, हमने थोड़ी देर को बोला है. फिर लड़का लोग भाग गया. शर्ट उतारना इज सच अ गैंगस्टर मूव इन स्ट्रीट फाइट ना. लाइक फुल विंटर लाइक जिम का पास वाला नेक्स्ट डे अगेन. मैं स्वेटशर्ट पहन के भी मेरा ठंडा लग रहा था. और ये वहाँ पे मैंने देखा इजी एंट्री, सीधा इजी एंट्री. सो दिस वन फनी पार्ट. तो नेक्स्ट डे जिम गया, मैं लोगों को देखा तो एक को पूछा तुम्हारा क्या इंजरी हुआ. उसका जींस फटा हुआ था यहाँ पे. वो डबल लेग गया रास्ता में. फुल स्विंग ऐसे गिरा. फिर वो गिरा, हम उसको सॉकर किक मार दिया. Oh damn. That would have been brutal, bro. Yeah, you definitely don't want to get into a street fight with MMA guys or people who do combat sport, legit combat sports. क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है कि how vulnerable they are in a street fight. Like they think कि they will throw the punch like this. सारा fantasy होता है ना दिमाग में. जैसे पहले बचपन में क्रिकेट खेल के ऐसे शैडो प्रैक्टिस करके नहीं होता था. 6 ही मारता हूँ इधर, ये देखो बाउंसर में छक्का मारता हूँ ब्रेटली के. So वैसा ही लोगों को फील होता है कि स्ट्राइकिंग में हर शॉट नॉकआउट मारेंगे, लेकिन वंस यू एक्चुअली गेट हिट बाय अ शॉट आल्सो देन यू रियलाइज कि भाई गलत काम हो गया. पहले तो लोग स्टन हो जाते हैं लाइक थोड़े टाइम के लिए, एंड देन दे आर लाइक ओह शिट, नॉट द वे आई होप्ड आई विल गो. सो गुड, यू गाइज हैव हैड योर फेयर शेयर ऑफ स्ट्रीट फाइट्स. मेरे स्ट्रीट फाइट्स होते थे पहले, बट when I was like very very young, when I was like in class 7th 8th, तब street fight होता था. उसके बाद once I grew up, I became a little bit matured and नहीं तो पहले ऐसे random वाला street fight ही होता था. उस समय मैंने taekwondo सीखा था, ठीक है. येलो बेल्ट, नॉट मच, 3-4 महीना ऐसे गया था. और उसमें तो फैंसी किक सिखाते हैं, और वहाँ पे जो पर्पल बेल्ट और हायर बेल्ट जो होते हैं, दे आर थ्रोइंग लाइक दीज 5 मूव कॉम्बोज ऐसे ऐसे. तो तुमको लगता है कि यार ये सब सीख गया मैं, फिर तो मैं ही हूँ, 50 लोग तो किधर कहीं नहीं गए. सो मुझे भी वो आ गया था मेरे अंदर, तो मैं थोड़ा सा जल्दी पिक करता था स्ट्रीट फाइट उस टाइम.
तो मेरे से एक सीनियर लड़का था, वो थोड़ा सा मेरे को बुली टाइप करता था, मतलब सीनियर था बस इसलिए कि सीट, कभी बस में आ रहा हूँ साथ में हम लोग आते थे तो सीट नहीं देगा मेरे को, इधर से घुसने नहीं देगा, परेशान करेगा, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ ऐसे पीछे बाल वाल खींचेगा. सो ऑल दिस स्टूपिड स्टफ. ही वाज इन क्लास 10th आई गेस. इमेजिन 10th क्लास गाय डूइंग दैट. सो मेरे को उस पर हमेशा खुन्नस तो रहता ही था कि इसको किसी ने मारूंगा. और जैसे ही मैंने थोड़ा सा टाइकोंडो सीखा ना, राइट आफ्टर लाइक 2 weeks of training I was like let's go. कॉन्फिडेंस लेवल. मैंने कहा अब तो जितना काता सीखा है सारा इसके ऊपर. सो आई गो. जैसे ही इस बार उसने कुछ किया, हम लोग ऐसे वापस आ रहे थे और वी बोथ यूज्ड टू लिव लाइक वेरी क्लोज टू आवर इन आवर लोकेलिटी आल्सो. एंड ही वॉज वॉकिंग एंड आई वॉज वॉकिंग, और किसी चीज़ पे बहस हुई तो मैंने कहा कुछ करके दिखाया ऐसा कुछ, तो आ गया वो भी. सो ही ग्रैब माई कॉलर एंड बाय द टाइम आई कुड डू एनीथिंग ही जस्ट हेडबटटेड मी ऑन द नोज. अच्छा. जैसे ही हेडबट नोज पे लगा मेरे को फील हुआ ओह शिट वेयर एम आई. आँख पूरा वाटर हो गया जो होता है, और अंदर से ना वो जो रेड वाला फीलिंग आता है कि नाउ आई एम सीइंग रेड, वो आ गया. क्योंकि अभी मैं एम्पावर्ड तो था ही टाइकोंडो. मैंने घूम के किक मारने की कोशिश किया, कुछ हुआ ही नहीं. घूम ही नहीं पाया. मैंने कहा मैं घूम क्यों नहीं पा रहा, कॉलर पकड़ा हुआ है. तो उसके बाद फिर वो जो अपना देसी घुसाने वाला टेक्निक होता है वही काम कर रहा है. आई एम थ्रोइंग, ही इज थ्रोइंग. किसी को लग रहा है, किसी को मेरे कभी बैक पे लग रहा है, कभी शोल्डर में बाउंस हो रहा है. लेकिन उसको वो पिट गया ना थोड़ा सा, तो उसको समझ में आया कि हाँ नाउ लेट्स नॉट फक विथ हिम. और उसके बाद से फिर वो शांत हो गया. लेकिन मैंने टाइकोंडो काम नहीं किया. एक पॉइंट पे क्या हुआ ना कि उसका बैग नीचे गिर गया और वो भागने लगा. तो जैसे ही वो भाग रहा था मैंने कहा अब चेस करके क्या मारो इसको, घर में घुस जाएगा. तो मैंने उसका बैग उठाया और ऐसे घुमा के फेंक दिया. कहीं भी जाए घुमा के फेंका तो रास्ते में एक नाली थी साइड में, सीधा हो जाके नाली में ही गिरा. और वो फिर वो घर में घुस गया, अपने मम्मी को निकालता है. मम्मी उसकी आती है, कहती है ऐसे कैसे तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, क्या किया तुमने इसके साथ. और उसका यहाँ पे होठ वोट पे कुछ कट गया था. तो वो कहता है कि मम्मी इसने मेरा चेन भी गिरा दिया. तो उसकी मम्मी ने कहा कि चेन ढूंढो इसका अभी, नहीं तो मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी. सो बेसिकली ही वाज वेयरिंग अ चेन, और वो छीना झपटी में वो कहीं टूट के गिर गया था. पता चला वो भी उसके बैग के साथ नाली में ही मिला. So yeah, this was one of the street fight experiences. Not much, maybe 2 or 3 more. बहुत बार मैं पिटा, एक बार मैं बहुत बुरी तरह पिटा था. This guy had a stick with him, and he sucker sticked me. लोग sucker punch करते हैं ना. I was just sitting and we were just trash talking, and he just came from behind and just hit me with a stick. And I was like, oh shit, कहीं गरम फील हो रहा है क्या. और जब तक मैं घूमता और ऐसे मेरे को 2-3 और पड़ गया पैर वैर में, तो फिर वही छीना झपटी वाला बेसिक, उसमें मैं पिट गया था ज़्यादा. सो यस. तेरा कोई स्ट्रीट फाइट एक्सपीरियंस? मुझे बहुत स्कूल में ज़्यादा होता था. So we used to have this thing at 3 p.m. after school. You just walk around the school, you'll find someone fighting in classrooms, right? And usually that was me. So once what happened was I was in class 9, I was fighting this guy from class 8. I beat him up, then he went and called his brother. So his brother comes, his brother is class 10, right? And those time people class 10 were like old as hell, man. He was huge. So he comes in and he starts with, so I fight back and he's like, we're quite evenly matched. All of a sudden I just feel like something hit me from behind my head. I look and like there's like 6 guys stopping me. Oh shit. I was stopping, so I didn't know what to do, right? So one of my friend, he came and pushed the guy. So I ran. And then I ran to the next classroom. I tried to close the door. The guy kicked the door open. Oh fuck! Now you're trapped. I'm trapped. But then when he kicked the door open, a cricket bat fell on the side. There was a cricket bat there. Uthalia, the first person again, I just whacked him so hard, sab bhag gaya. फिर स्कूल से निकाल दिया. Good save. School से rusticated. Only you got them also. Bat इसने उठा दिया bro. हाथ वाथ स्ट्रीट चलता फाइट में है. ही होता है ना, डैमेज जिसको मिला उसको अपन को. डैमेज इसको. स्ट्रीट स्कूल वाले फाइट में मेरे को जहाँ तक याद है क्या होता था कि 2 लोग बस लड़ाई शुरू करते थे, उसके बाद बाकी के लोग बस रैंडम लोगों को मार रहे होते थे. उसके बाद ग्रुप समझ में नहीं आता था ना. 3-4 लोग बस मेन जो अंदर घुसे हुए लड़ रहे हैं और बाकी इधर कोई रैंडम किसी को मार के भाग रहा है कोई. लोगों को बस मारने का एक मौका चाहिए. उसके बाद फिर बाद में आके फेंकते हुए थे, अरे मैंने 2-3 को मारा. देखा तूने. तब क्लोज जीरो का बहुत सवाल था सब पे. सबको 1v1 नहीं बनना था. MMA fight
कभी ग्रैपलिंग यूज किया या सिर्फ स्ट्राइकिंग से फिनिश किया स्ट्रेट फाइट्स? RNC लगाया था एक बार. आरएनसी लगाया था? This is before I knew jiu-jitsu. क्या बात है. Sleeper hold आता था ना. On- wrestling में. WWE वही से सीखा था थोड़ा. अंडरटेकर मारता था. स्कूल बॉय होल्डिंग जब नहीं सीखा वही था ऐसे मैंने। गिलिटी. School boy चुप. अच्छा वो साइड वाला हाँ, वो सबसे कॉमन जोक है किसी को, स्पेशली जो फैट गाय होता है that is the one guy who उसको ज्यादा मूव करने का, हाथ वाथ चलाने का मन नहीं करता है, जस्ट पकड़ लो, दो लोगों को पकड़ लो. अभी होता तो बैक ले लेता. पहले तो पता ही नहीं कि क्या करना है भाई. ब्रो अच्छे से लोग जब बुलडॉग चौक पकड़ते हैं या ये स्कूल बॉय हेडलॉक पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है निकलना. लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. मैंने एक बार जैसे अपने से भी 20 kg हैवी बंदे को कह दिया क्लास के टाइम डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि जस्ट होल्ड माई हेड, और वो थोड़ा सा आराम से प्यार से बोल गया कोच हूँ ठीक है. मैंने कहा ब्रो एक्चुअली होल्ड मी फॉर रियल बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग. उसने जो प्रेशर डाला ना मुझे लगा बैक थोड़ा सा क्रैक हो गया, नेक वेक का जो C2 C3 होता है. मैंने कहा ब्रो रिलैक्स, इतना भी रियल नहीं होता है. सो दो स्टफ मैन. तुम लोग UFC कब से फॉलो कर रहे हो? MMA जब से ज्वाइन किया उसके बाद मालूम चला UFC Who was the first star that you liked or you wanted to emulate? एंडरसन सिल्वा. Anderson Silva. That's a classic one. तेरा? Connor. Connor. तेरा David? I saw Hoist, like I saw the tournaments. The You time. first watches the But UFC this was in the tournament? 2000s. Yeah, we had a channel, like new channel Achha. came and they shoot it. So I saw Hoist do that and I was just like, Damn. what is this? Like, how can someone so small do So that? you know about jiu-jitsu from 2000s? I know about it, but yeah, I trained. That's way insane to even know. क्योंकि 2000 में तो US में भी उतना पॉपुलर नहीं था. लाइक 1993 में ये हुआ था UFC वाला फर्स्ट टूर्नामेंट, और उसके बाद नेक्स्ट के 5-6 साल US में ही सिर्फ लाइक कुछ हैंडफुल ऑफ ब्लू बेल्ट्स थे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कितनी जल्दी US में, अभी तो चलो 20 साल हो गया, अभी 2000 हमें लगता है नज़दीक ही है, इट्स बीन 20-25 years, और इसमें US हैज़ लाइक thousands and thousands of black belts, जबकि India has like 1 or 2 and that also not super legit. Bro, you should see the blue belts we have around our us. In So your class? legit, so legit. Bro. In your class? Not our class, around us. Around us. गुवाहाटी में कितने blue belts हैं? Gogoi is one. One. Who else? So not many, I guess. So I know their names, but I don't want to say it out loud Achha. because I don't think they're legit. It's not I don't think they're legit. I mean, like, you can't do an armbar, so you're not legit. Right. I mean, blue belt, you have to be. Blue belt is a serious belt in jiu-jitsu. अगर तेरे को blue belt मिला है, इसका मतलब कि you are at least better than 99% of humans on earth, if you think about it that way, in terms of fighting. Not financially or anything, you might be the worst probably. So even me, like we started properly training with Lachlan in 2015, I guess, Huh. and then I got my blue in towards 17. Took me 2 17. years, and I was like training regularly twice a day. I remember जब दीबू के साथ तेरा वहाँ मैच हुआ था SAJIF में, तब you were already a blue belt, I guess. Yeah. I just got in my blue belt. That time. Yeah. I was so I was competing in SJIF. What really pissed me off is I won the tournament, but I lost to Debo. I wanted that. Debo, I'm coming for you. A rematch in the making. तुम लोग अभी 2 बार फाइट हो चुका है ना? दो बार हार So Deepak is another guy from, He's from Assam, right? So you can count him also as a higher belt there. So you got like Debo, 2 I purple think is belt. the best in Assam. Yes, for in the sure. country I would say, bro. Assam. Assam to guaranteed, like I'll Yeah. tell you, there's no one better than Debo. I can tell you. He has won. Maybe the whole the whole Northeast, guaranteed no one's better. He has won ADCC now. He has won Strangle Open twice, I guess. So yeah, he's undisputedly the best in his category, weight category right now in the country, and probably pound for pound one of the top 3-5 guy in the country. Very very technical, very methodical. और उसके साथ भी we rolled ना that when we came for Strangle, I guess. So how did you guys improve your game? Like, do you study? Do you do outside the work outside your training room? How do you improve continuously? मतलब नाइट ट्रेन आई गेट स्टक इन सम पोजीशंस, फिर मैं वो पोजीशन अलग से देखता हूँ कि कहाँ मिस्टेक किया, वो क्या नहीं किया, फिर वहाँ से कैसे निकलना है. तो वही वैसे लाइक द रीज़न आई वेंट टू फुकेट टॉप टीम ऑल्सो 2018 में व्हेन आई वाज इन गाडो. इन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो वेट बहुत कम है इन लोग, Right. राइट. सो सबका
एडवांटेज मेरे ऊपर रहता है। गार्डो में सारे बड़े हाँ। वेट वाले लोग थे, कांता और ये सब लोग थे ना। और आगे फेंकते ग्रैपलिंग डमी था उनके लिए। मैं सोचा रेस्ट डाउन था। ऐसे तो नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा मतलब। हाँ, फिर हम सोचा फुकेट टॉपिंग में एक कैंप करके आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करके आता हूँ, फिर बताऊंगा इन लोग पी लूंगा होगा। लेकिन हाँ इम्प्रूव तो हुआ वहाँ पे बहुत, एटलीस्ट आई कुड कोप अप विद दिस गाइस। राइट। मुझे लगता है कि जब भी तुम अपना ट्रेनिंग एनवायरनमेंट छोड़ के कहीं भी बाहर जाते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर विद डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स एंड माइंड सेट एंड फिलोसफीज, कुछ ना कुछ तो यू टेक बैक, लाइक यू अपग्रेड। सबका अपना स्टाइल होता है, इट्स Right. डिफरेंट टू ट्रेन विद एवरीवन। और तेरा हाउ डू यू थिंक यू वर्क ऑन योर गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन या लर्निंग मोर? अपना जो मुझे लगता है मेरा वीक पॉइंट्स है, उसमें कभी लाइक पर्सनली भी खुद को टाइम देता हूँ, आई हैव टू वर्क ऑन इट। जैसे अभी तुम लोग का यहाँ पे आया, यहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, जो मेरा डाउट्स था वहाँ पे। Right. सो इट हेल्प्स। So traveling and training is one of the ways that you do it. Do you also do any kind of tape study? Like you watch matches या उसमें से कोई strategy निकालते हो कि इसने ये punch ऐसे setup किया, ये knockdown ऐसे setup किया, ऐसा कुछ? आजकल तो बहुत सारे करके देते हैं खुद Instagram पे, right? Yeah, exactly. So that has become a good resource. और is this something part of your training कि sometimes you film yourself and you see what mistakes that you're making in the round? या समटाइम्स तुम लोगों के पास तो CCTV भी है ना? हाँ मैं वही क्लास के बाद स्पारिंग राउंड्स के बाद देखता हूँ। You watch, right? That is a great resource. Like मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ है. I make someone tape it, and then I take the good parts and make my reel. That's other advantage. You can keep producing reels. नेक्स्ट स्पारिंग में हाँ ये तो ये यूज करता है। हाँ हाँ वो दो तरफ जा सकता है। अगर तेरा बेस्ट पार्ट इसने देख लिया, now it's coming for you. So मैं ये खूब करता हूँ, मैं अपने स्टोरीज पे पोस्ट करते रहता हूँ. Unfortunately, a lot of people watch it. उनको थोड़ा सा समझ में भी आता है. I try to explain it also. So I think that helps people doing jiu-jitsu at least in the country. It does, like, It does. I always contact you, right, if I have any doubts and stuff. Because Lachlan is not here. Yeah. He's busy also. And timings are so different. Right. When you are sleeping, they are waking up. So it's hard. And obviously you're always studying, so I just like, yo, Peeyush, what's up? Can you help me with this? Thanks, bro. Thanks for following. I think people, because they trust it, I am also motivated in making it, right? Like otherwise, it takes like a couple of hours of my day every day recording and then writing and then filming. It does. So I'm grateful that people like it, and hopefully it helps you win fights, man. That's the ultimate goal. If it makes you win a real fight, then I'll feel like we are successful in doing that. So अभी क्या प्लान है ट्रेनिंग के साथ साथ, और कहाँ घूमने का प्लान बना है गुड़गांव में? कल दिल्ली जाएगा. गुड़गांव में कहीं नहीं घूमना? क्या है गुड़गांव? मॉल ही है. सजेस्ट करो कुछ अच्छा। एम्बियंस मॉल इज अ गुड वन, साइबर हब, मतलब ये सारा बस फैंसी प्लेस है, ऐसा कुछ घूमने लायक हिस्टोरिक जगह नहीं है गुड़गांव में. इट्स अ वेरी फेक सिटी दैट वे. Because I'm here quite often, no? Like I keep coming up. लास्ट बार कब आया था? Last तो जब ट्रेनिंग आया था. When was Wally this? Scope में. That was like years ago, bro. That was, 2 years ago. yeah, Just before we started. I left and then we had the plan. that was a traumatic experience for you, right? Dramatic. Like तेरे को जगह वगैरह रहने का अच्छा नहीं मिल रहा था ना? You I were, was like a little hard. तेरा पूरा schedule off हो गया था. Some good. Plus you got injured also. So many things happened, bro. I was just like, I can't going back home. This is too much. Yeah, Gurgaon is a difficult place to survive, like thrive in general, bro. I feel like कि pressure बहुत होता है यहाँ पे just as a city. जबकि I've seen this in Guwahati and other places. थोड़ा सा laid back kind of lifestyle भी होता है. Plus यहाँ का weather इतना extreme है, या तो इतनी खतरनाक गर्मी या तो फिर उतना ही खतरनाक ठंड. So you can't have pleasant weather conditions to train in. So that is another taxing thing on you. Plus the noise, the pollution, all these things add up. So it is a difficult place to survive. And we're like, I come from the hills, right? I want to see some Exactly. greenery. Like hills people can never survive in Gurgaon. That I can guarantee. Prakhar bhi aaya tha. He felt homesick in like within a month, and he was like, "I'm going back, bro. Sorry, can't learn Bro, MMA we here." need some nature, bro. You do. यहाँ पे तो nature यही होता है कि I just walk to the gym. उसमें जितना nature दिख गया, 15-20 buildings दिख गई, 2-3 बच्चे दिख गए इधर उधर यूरिनेट करते हुए. That's all. Alright guys, so Guwahati में apart from when you're not training, what are you doing? क्या करते हो? मजे करते हो? पार्टी रेस्ट करते हैं.
पार्टी ब्रो, ये पार्टी कर रहा है तो रेस्ट कर रहा है, सही बता। असली वाला कौन है? ये इन लोग ही आता है, ये जेसन मेरे को उठा के लेके जाता है। I am not involved. तेरा तो अलग ही सीन चलता है ना। You are the coach. Coach does not mingle with the students. Sadly. Actually, luckily, because these guys are mad. These had an accident recently. हाँ, मैंने सुना जेसन के साथ क्या हुआ ब्रो? कितना इनोसेंट इंसिडेंट था ये। मैं सोबर था हाँ, तो ये 80 में ठोक दिया गाड़ी को। सोबर में ठोक दिया। हाँ, मैं पीछे सो रहा था आराम से, सीट का नीचे घुस गया, लग गया एक्सीडेंट। Oh shit, that was dangerous bro. चलाता भी है मतलब बहुत फास्ट, उसके साथ बाइक में बैठने से भी रास्ता में पैर पूरा ऐसे चुके रहते हैं। क्या वो मोटो क्रॉस खेलता है रोड पे। करें? Jason is a wild dude bro, like wild dude. He calls me up and he says, I was sober and I crashed my car. I should have drank. Exactly. वो whenever his normal state he will feel like he is already drunk. उसको normally देखेगा ना बात करते हुए या कुछ करते हुए। वो इतना funny incident था, मैंने ये नेपाल वाले पे ही mention किया था। Random हम लोग फाइट के नेक्स्ट दिन ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, सुबह में आके मैं इसके साथ बैठ के, और जेसन अंदर था, मैं गया अंदर कुछ लाइटर वाइटर ढूंढने के लिए। जेसन अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, और रैंडम बकचोदी चल रहा है उनका। कह रहा है नीम का पत्ता करवा है ब्रो, तू बहुत बड़ा परवा। रैंडम, मैंने कहा ब्रो कल रात को ये फाइट हार के आया है। नो टेंशन इन द वर्ल्ड, जस्ट चिलिंग विद हिज फ्रेंड डूइंग ऑल द बकचोदी। खतरनाक। I like that dude a lot. लेकिन अभी वो इंजर्ड है ना? हाँ, अभी एक्सीडेंट भी तो हो गया ऊपर। एक्सीडेंट से ही इंजर्ड हुआ। अच्छा, ऐसे तो सही था। So good, happy नहीं, quick recovery to Jason guys. And और बताओ यार, फन में पार्टी में कहाँ, what do you guys do? क्योंकि हम अगर आएंगे गुवाहाटी तो हमें कहाँ ले जाओगे? So, मेघालय। so if you come down, when you guys come down, your tour guide will be Manish, right? Tourist guy. I'm just the driver because Manish knows more places than me, though I'm from there. Okay. गुवाहाटी में अच्छी जगह है नहीं ना? क्या अच्छी जगह मतलब कैसा चल गुड़गांव जैसा है भाई। वही गुड़गांव से दिल्ली जाना पड़ेगा वहाँ, हाँ। शिलोंग, राइट? सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं व्हेन दिस थिंग हैपेंस, अपने सिक्किम वाला इवेंट। नेहांश फाइट करेगा उसमें और दैविक फाइट करेगा। बोथ ऑफ दीस गाइज आर गुड ब्रो, लाइक देयर ग्रैपलिंग इज लेजिट। Got to train with them. हाँ, and Davik is also really good. उसको scramble, striking also. bro striking तो अच्छा है, उसको grappling में hold करने में मेरे को problem होता है। Like he's so small than me, if you imagine, his weight is what 56, 58, I'm around 90, and it's so difficult to just hold him क्योंकि सारा scrimmage सीख गया है, बस फुदकते रहता है left right. I get tired holding him down. So that guy has a bright future. उसके साथ बस एक problem है, वो कभी drill ही नहीं करता। Like there are some guys who are so talented कि एक बार देख के सीख जाते हैं, उनको ड्रिल करने की जरूरत नहीं। He's that guy. कभी ड्रिल करते नहीं देखा उसको। And he asks the right questions also. Yes, he does. When he asks for questions, generally वो question पूछता भी नहीं है। मेरे को बार उसको डांटना पड़ता है कि ब्रो तेरा रोल परफेक्ट हुआ? कहता है yes sir. कोई क्वेश्चन नहीं है। Crazy. So उस टाइम we'll come to सिक्किम। सिक्किम कितनी दूर है गुवाहाटी से? 1 घंटा का फ्लाइट है। 1 घंटा। So from Guwahati, what was the place that will go directly to? यहाँ से सिक्किम का डायरेक्ट फ्लाइट मिलता है क्या? पता नहीं सिक्किम का डायरेक्ट मिलता है नहीं। Because you guys say कि हर चीज़ के लिए गुवाहाटी आना पड़ता है, फिर वहाँ से you can go take a bus or something. Some Gangtok. No, you can fly there. We can fly directly to Gangtok, right? You Like, can fly there. Yeah. so that is probably what we'll do. लेकिन I think traveling का भी अपना फन है नहीं? बस से या ऐसे कार से? You don't want to go in hilly areas because the roads are bad. It's very tiring. Guwahati to Shillong is the best. Perfect. 2 hours journey. रास्ता बढ़िया. Yeah. So Guwahati to Shillong. We can definitely do a pit stop in Shillong along with Sikkim. Sikkim is a good place. I've never. Beautiful. Yes, the waterfalls and all those are there. Sikkim is cold, so it's अच्छा। the north, right? So it's. नेपाल की तरफ ज़्यादा है। They speak Nepali as well then. Right. So guys, we'll take a quick break and then we'll come back on the other side a little bit more casual. Check. Back. What is this cough all about? Hey, AC. AC, right.
Yeah, it's definitely not from smoking at all. Alright, guys. So now let's discuss the biggest UFC event which we are going to witness this Sunday. It's UFC 291. And what a fucking stacked card, bro. Like, amazing. Every fight is so exciting fight. Can't wait to see it on Sunday. And definitely I would want you guys to come together, watch if we can. वैसे हम प्लान कर रहे थे कि एक फाइट कंपेनियन टाइप का भी कुछ करने का ना. So can we do it? तू आ पाएगा? गोवा वाला सीन चल रहा है. गोवा वाला ठीक है. मैं बताता हूँ. So I would like to do that. Yes, so maybe not this UFC, but some UFC we have to start that with, because I think fight companion is something that people will be very interested in. वो साथ में देखने का ना, और जब देसी लॉन्डे कमेंट कर रहे होते हैं तो मजा आता है, right? That'll be something fun. So let's quickly get into the card, guys. I want to just hear your predictions, perspective. So starting the card on the prelims, there is a big fight. Derek Lewis, the destroyer from the heavyweight division. अभी पिछले कुछ fights से the Black Beast. He Balls are getting hot. yes, everyone remembers that. उसके बारे में और कुछ पता ना हो. उसका सबसे famous line मेरे को लगा था जब रोंडा राउजी को उसने बोला था उसके बॉयफ्रेंड को हराने के बाद, where's a fine ass at? That was a G line. So उसका fight, I think he's going to win, क्योंकि उसका जो opponent है Marcos Rogerio de Lima. De Lima, yes. So De Lima, I don't know if he has that great of a record, and Black Beast has great knockout power. That is what separated him from rest of the guys. वो गंदे पोजीशन में भी होके, I remember his match with Volkan Ozdemir. I think वो जो एक सबसे लंबा फाइटर नहीं था जिसको नो टाइम या उसका निकनेम था, लास्ट मोमेंट में नॉकआउट किया, वो जीत रहा था वो फाइट, पूरा फाइट, and then he just gets on top, lands like 2 heavy elbows, and this guy gets knocked out. Think about heavyweights, man. That's crazy power. और वो नो जीरो कंडीशनिंग कुछ नहीं करता था. उसका मील होता था, फाइट प्रिपरेशन होता था, न्यूट्रिशनल प्लान था, KFC and Popeyes chicken. फॉर दैट फाइट वो बस 1 महीना ट्रेनिंग किया, वो बोला. हाँ, he does not train. वो ट्रकर वकर भी था ना, सो जनरल जो पावर था आके हाथ स्विंग करता था. उसके बाद जो होता है देखा जाएगा. Alright, let's move on to the main card. Michael Chiesa versus Holland. Kevin Holland. This will be entertaining. This will be a good fight. Michael Chiesa is a jiu-jitsu fighter. Mostly he has submissions to his name. And Kevin Holland is someone who has almost zero grappling. हर कोई उसको टेक डाउन मारता है, हर कोई उसको सबमिट कर देता है. खमजत से भी बुरी तरह सबमिट. लेकिन लास्ट फाइट वो पॉन्जिनिबियो के अगेंस्ट he got a KO, TKO. So he's coming off a win, whereas Michael Chiesa is coming off, I guess, 2 or 3 losses. And Michael Chiesa hasn't fought in a while. He fought, I think, बहुत recently fight किया था, लेकिन he lost. So that's why probably you didn't hear about him. Michael Chiesa का एक बार देखना record, if you can find it. But yeah, who do you have in this one? I got Holland for this one. क्योंकि Holland का striking काफी अच्छा है, and Mike Chiesa can get caught in that one, right? Yeah. So prediction? Holland maybe, अगर वो Holland. लैंड करता है like few cleans. What about you, bro? I have some good hopes. हाँ, अगर वो So you think Holland will take it? I don't know. Okay, so यहाँ पे हमारा striking versus jiu-jitsu fight है. Striking guy is picking Kevin Holland, jiu-jitsu guy is picking Michael Chiesa. I think if Michael can just take him down, the fight will be over. Because this guy will expose his back or do something and he will just follow him. उसका jiu-jitsu काफी slick है. ठीक है. Then we have our, this guy is very close to my heart, Tony Ferguson, going against, who is Tony fighting, bro? Bobby Green. Bobby Green, yes. 2 characters. 2 different guys. उसको भी देखा 50 सेंट जैसा क्लोथ पहन के आया था. किसी ने इस पे कमेंट किया था उनके फेस ऑफ वाले इसमें कि here is Tony Ferguson versus 49 cents. The discounted 50 cents. So that guy. So who do you think, David? Who do you got in this one? I got Bobby for this. I mean, I love Tony, but Yeah. I think it's वो time. पुराना वाला टोनी नहीं रहा ना, लेकिन यही दिक्कत है. Like you saw with the Nate Diaz fight, right? He didn't look. He I didn't could look be like wrong. he was Like, I could be professional. wrong, but then I think Father Time was caught up. Yeah. Tony Ferguson का मुझे याद है when he was at his prime, जब खबीब से उसका फाइट चलने का बात होता था. The fight that we never got. 3 बार शायद कैंसिल हुआ था, 3 या 5 बार. 4 बार. एक बार खबीब का वेट कट में प्रॉब्लम हो गया, तिरामिसू ज्यादा खा लिया था उसने, याद है?
Bro, उस टाइम peak MMA चल रहा था. Like John Jones was fighting regularly. Daniel Cormier वाला rivalry चल रहा था. McGregor was still there, coming back and forth. McGregor शायद Mayweather वाला fight कर रहा था. So उस टाइम जो conversations होता था वो खतरनाक होता था. And Tony versus Khabib. Actually, people used to think that Tony can destroy Khabib. Maybe he could have back then. I don't know. Now no chance. In the hindsight, bro, Khabib would have mauled him like 100%. Uska grappling, if it didn't work against Alex, our lightweight fighter Oliveira, Charles Oliveira, uske against जब नहीं काम किया, and he got arm almost broke, no? his arm broke. उसके बाद फिर next fight में his heel almost snapped in half. जो इसने मारा था. Why do I keep forgetting the name? Our guy who Charles Oliveira just beat. Justin Gaethje? No, he now it just went out from Bro, नाम देख एक बार Charles Oliveira versus. How can I forget? I was siding Chandler. with this. I was siding with this guy. Was it Chandler? नहीं. Charles Oliveira. D D से He's नाम made है out of उसका. Dariush, Benil Oh, Dariush. Peeyush Dariush. Yes. Oh shit! What happens, bro? Marijuana just eats your brain cells. Not that we do it, but I think MMA eats our brain cells. MMA eats your brain. Yes. Blame it on the MMA. It's the shots I ate today from Manish punching me. Dariush, हाँ, so Dariush ने उसका heel almost तोड़ दिया था, and he did not tap to that shit. So I don't know. I want to go with Tony. Heart says Tony, वही, और mind says Bobby Green वाला हाल है. But I think Bobby Green को हरा देना चाहिए यार. Let's go Tony. Justin Gaethje ने उसको सबसे बुरी तरह मारा था. Can't. Gaethje is Gaethje. So many shots, no? Yeah. The most violent man. He blocked all the punches with his head and body in that match. और Gaethje खतरनाक मारता है bro. When he was hard throwing shots. those shots, oof. He can't control his body, no? It goes if it misses. Yeah, वो पूरा 360 घूम के मारता है. लेकिन लोगों का फाइट में वो होता ना, दोनों एक साथ जो अपरकट मारा था. हाँ, उस समय Gaethje को भी लगा था. I think that was the only moment where it was like, अच्छा, now Tony can finish. और वो पुराना Tony होता finish कर भी देता. But he was just too slow to capitalize. और Nate Diaz fight में तो like बहुत ही गंदा लगा यार. I think he was not even prepared for that fight. ऐसे ही आ गया था fight करने जल्दी. I think he had too much respect for Nate. और पहले तो Nate के against था भी नहीं. That whole card got reshuffled ना, याद है last moment में हमजद की वजह से. So उसके पहले किससे fight? हाँ, he was fighting that Chinese dude, Li Jiang या जो उसका नाम था. I think so. And that dude now retired also. जिसका वो suit बहुत popular हो गया था. He retired. Yeah, he retired. उसके back में कुछ injury हो गया, गंदा वाला. So yeah, that's the sport. Ki one moment you are almost a celebrity, and next moment now you're retired and gone. So, इस fight में again, Tony, I think what do you guys think? I want Tony to win. But Bobby can take it, Why? technically speaking. I see Bobby taking it. Heart says Tony. ठीक है. So we all agree on this one. Wonder Boy versus Michael Pereira. Wonder Boy. I got Wonder Boy. Wonder He's Boy. older than Tony and Nate Diaz. Wonder Boy. He fought in that card. No, he's like older. Yeah, he than is. Tony and He is Nate very Diaz. old. But his striking is so अपने good. 40s में या 38, 37 होगा. 38 or 39, like 39 I think. 39. His in-out movement, karate stance. Exactly. उसका karate stance और style है ना. He has the best kicks in MMA in my opinion. Like the way he throws. Again, not very powerful, but just like staying on the outside and peppering you. You can't see it coming, right? Like he'll throw the left and then the kick follows up. Yeah. And you don't see it coming. And it's from the lead leg. So, you know, like in Muay Thai, you switch, right? He does that karate where you just throw it from the hip. Yeah. And he does it so well. Karate guys have great kicks, man. Like उनका जो stance की वजह से they get that freedom of movement, no? Of moving forward, backward. So In and out अच्छा होता है. they don't get hit as much. और वंडर बॉय को भी फाइट करते हुए कितना टाइम हो गया. आई रिमेंबर एक पॉइंट पे वंडर बॉय वर्सेस वुडली 1, वुडली 2 ये सब चल रहा था. वुडली ने पूरे मैच में कुछ किया ही नहीं. And he just got a guillotine where we felt like his neck is going to snap in half. जिसमें वंडर बॉय को एक डीप गिलिटीन में लेके केज के अगेंस्ट ऐसे बिठाया हुआ था. एंड वंडर बॉय didn't tap to it. Somehow survived it. लेकिन those were the ages, bro, like of MMA. उस समय लगता था वुडली is unbeatable. Yeah. And then Woodley fell so hard, now he's disappeared. Very, very volatile sport.
So Wonder Boy in this one, right? Because Michael Pereira, again, decent overall striking and okayish grappling, but Wonder Boy is definitely a favorite in this one, skills wise and experience wise also. Next fight is probably my favorite fight of the card. Jan Blachowicz versus Alex motherfucking Pereira. Oh God. Opinions, guys. Let's go. This is a hard fight, you know. Both have like Blachowicz has this polished power, legendary polished power, and Alex Pereira has that left hook, man. That left hook from hell. But Pereira's Pereira's knee, his kickboxing is good. He is full kickboxing, yeah. Pereira's stance is like a bit weird. His fighting stance. बहुत ही square up रहता है ना हाँ. Dutch kickboxing style. अचानक से he can just generate power. I don't know how. But I want Pereira. Pereira, you? Pereira. Pereira. Any grappling fans in the house? I can't say because like you see, Jan looks like you can take him down and keep him there. Yes, Like, I think that's his path to victory as well, because. Pereira's left hook. So see, if he tries to exchange power with Alex Pereira, both things can happen. Even Jan can knock him out. Who knows? Because his chin is also very suspect. Pereira's, he gets hit, especially in the UFC time against Stylebender in both the matches. He almost got knocked out. In the second, he did get knocked out. And in this match also, he has, और इसके Jan के पास तो ज़्यादा ही power होगा. He is a much bigger fighter than Adesanya. So he can get knocked out if he trades, but now he'll also have that risk कि अगर Pereira का लग गया तो now I can also go. So I think Jan is a smart fighter in this sense. जब वो Stylebender के against भी खेला था, he knew कि he does not have the stand-up skills like him. So he just took him down, and उसका jiu-jitsu इतना slick है, मतलब he is a really high-level black belt for MMA. So I think he can hold Pereira down, and Pereira का जिस तरह से defensive movements है, I think Pereira can also get submitted. क्योंकि Adesanya के against the type of mistakes that he was making when he was getting taken down, he was just trying to turn and move, exposing his back at bad positions, which I think this guy Jan can definitely exploit. So I've got Jan in that one. David? I'll give it to Jan because of the wrestling. Jan, wrestling and the grappling. Although Pereira has become a recently minted brown belt, but I don't think that will count as much. But he is very big though. He is like almost a notch bigger than Jan Blachowicz also. वो heavyweight का fighter लगता है Alex Pereira. And he'll have so much more power because he's not going to cut that much weight. So he'll have more power. Pereira? Yeah. I think he'll cut weight though. No, I mean like he won't be cutting to middleweight, right? Right. So he'll have way more power. And middleweight is like how many kgs was it? 205 is the light heavyweight, so 185. 185. So that's like 20. Yeah. 20 pounds almost. 25. 35. So that's like 12 kgs. kgs. That's a lot. Yeah. And I think that's why he got knocked out also so quickly against Israel, because he was dehydrating so much that he just... Once you are dehydrated, I think you guys can attest to it that you are very vulnerable to knockouts. Definitely. Your mind is not properly hydrated and it can go into shock very easily. ठीक है. Let's move on to the next one, which is basically the main event. The main event, and probably one of the best main events in the recent memory. I hope it turns out to be, and I think we are guaranteed that it will turn out to be, because we have two fighters who are legendary now in UFC for their violence, what they bring to the table. So Justin Gaethje and Dustin Poirier. अभी एक बहुत ही मस्त comparison picture आया था, देखा, infographic type का, जिसमें दिया था Justin and Dustin. They both have had like 5 or 6 fights since their last meeting. 6 wins. And they both have equal number of TKOs and submissions in those fights. And they submissions होगा नहीं, TKO ही होगा. And they both have like equal letter in their names also. So Justin और Dustin उनका पूरा नाम भी जब ऐड करेगा ना, equal number of letters. तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस रिपोर्टर ने पूछा उससे डस्टिन से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पिक्चर, तो वो कहता है कि या आई थिंक इट्स द बैटल ऑफ द अस्टिन्स नाउ. So what's the take on that fight? How do you see it going? Poirier probably. Maybe he'll take 3 rounds to damage Gaethje and then like finish him.
3 rounds. So you think that the fight goes long rounds and Long then rounds, I guess. probably we get the finish. Like last time, it went like almost the distance, and near the end, tail end, Dustin managed to finish him. You bro? Poirier, he's very refined. And he's getting better in every fight. After every fight, His boxing is so good. And Very he's crisp. a black belt. Yeah. So, Poirier. How do you see this guy fight going, bro? David? I think Poirier takes it. All Poirier fans in the house. It's not I'm a He's Justin good. fan. I think Yeah. I want Gaethje, but the thing is, Gaethje takes too much damage, right? He stays there, he takes the shots, he eats the shots to land shots. Yeah. And Poirier is like his boxing is too good. Yeah. Like, his boxing is really high. He can grapple. I mean, both can grapple, so we know they're going to just knock each other out. I think कि Dustin का boxing इतना अच्छा है कि that kind of counters the style of Justin Gaethje. क्योंकि Justin Gaethje का पूरा game leg kick around, now he has improved his boxing as well, where he lands like insane uppercuts and shots. लेकिन अगर उस तरह के game plan को counter करना है, you can't just try to take him down. You can't just try to out kick him. Because if you do that, he's much more faster, more stronger kicks than you. So you have to have like very precise boxing where you can damage him while he's attempting those shots. And I think that's what Dustin is so good at, is attacking people when they are trying to hurt you, and he does that very precisely. So इस हिसाब से I think Dustin should take it. And as you said कि वो हर fight के साथ better version में आता है, उसका कुछ ना कुछ boxing का improvement दिखता है, guard का improvement दिखता है. The setups, he has now learned the calf kick himself, which he damaged corner with. So all these new tools that he has added from past 5 years. और वो भी कह रहा था ये बात कि I know it's a completely new fight, so I didn't even study the last fight for this one. Because in last 5 years, we both have grown. Even Justin has become like tremendous fighter. अब थोड़ा सा कम violence करता है, मतलब More controlled. हाँ, more controlled chaos है. वो एक line बोला उसने कहा कि earlier he used to be like a car wreck, but now he is a car wreck with a seat belt on. Dustin थोड़ा prepare करके आया था अपने press conference के लिए. So yeah, and overall I like his personality as well. Like Dustin Poirier, the way he carries himself, presents himself. कुछ वो charity भी करता है, Good Fight Foundation ऐसा करके. जिसका उसको मैकग्रेगर ने आज तक पैसा नहीं दिया. Give it to the boys and girls club instead, right? वो कितना मीन आदमी है यार कॉनर. पहले कहता है कि हाँ I'll match your amount, I'll send it to you. और जैसे ही fight हारा, if he would have won the fight, he would have probably made it, right? Yeah, I guarantee you would have given it. लेकिन हारने के खुन्नस में he was like fuck off. Weird guy, bro, weird guy. आजकल उसका नया ये आया ना स्टाउट, कुछ अपना बियर प्रमोट कर रहा है, विस्की, नेचुरल विस्की. बट दैट्स द थिंग, उसका प्रमोशन इतना अच्छा है ना कि वो कोई भी बिजनेस शुरू करे इंस्टेंटली उसका फॉलोइंग और ये सब इतना बड़ा, लाइक प्रॉपर 12 बिकेम सच अ ह्यूज ब्रांड. Yeah. अभी उसको बेच भी दिया उसने, आई थिंक अपना स्टेक्स उसमें फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, $200-300 मिलियन Yeah, he sold his stakes, but I think he still is like the brand ambassador and हाँ, he gets paid. वो for तो that. होगा ही, फ्री में कर रहा है. well I mean Free में इतना तो फॉलोइंग है. So Conor is, जिस चीज को भी टच करता है that turns into gold, except his TUF team. Did you follow TUF guys? TUF He finally got a win, right? Yeah. finally और वो भी खतरनाक डबल फिस्ट, डबल हैमर. वो बंदा भी ज्यादा जोश में आ गया कि एटलीस्ट एक तो मिल रहा है. TUF has been brutal for him, bro. TUF follow करते हो तुम लोग? I watched the highlights. And Updates, highlights. Instagram पे जो आता है Always, most of the time. करके सिर्फ fight देखता हूँ. हाँ, exactly. इस बार का तो सीजन इतना क्रिंज था ना कि you can not watch कि हाँ he is telling his life story कि मैं यहाँ से नहीं सुनना यार, जाओ निकलो फाइट दिखाओ. या तो इन हाउस में लड़ाई दिखाओ कि कॉर्नर किसी को पकड़ के घुमा. नहीं तो सीधा फाइट्स दिखाओ. अब फाइट्स एक्चुअली अच्छे थे. लाइक एक जो वो ग्रैपलिंग वाला हुआ था जिसमें लास्ट मोमेंट में कॉर्नर का गाय हार जाता है गिलेटिन से. दैट फाइट इफ यू वॉच इट फुल, कॉर्नर्स गाय वाज विनिंग थ्रू आउट, इसीलिए उसको और इतना स्टिंग कर रहा था ना ये सारा डिफीट. दिस गाय इज विनिंग और लास्ट मोमेंट पे ही गिव्स अप अ गिलेटिन एंड गेट्स फिनिश्ड. कॉर्नर मैकग्रेगर. you think he's doing a comeback? I don't know, bro. If I had that kind of money, I would not try to make a comeback. I think उसको ना अब fights pick करना चाहिए ऐसे बंदे के साथ जिसको कि he knows कि he can beat, and just start talking trash to them. Yeah. A guy like Cowboy Cerrone was the best one. Yeah.
उस skill level का. But now that he has retired, he can't have that fight. Cowboy Cerrone का देखा diss to Andrew Tate. Oh, I heard. कल ही उसने पोस्ट किया था. I shared it. उसमें कहता है कि Andrew Tate has such a padded record. He is 81-0 or whatever in kickboxing, but he has fought guys who nobody knows name of. Like बहुत ही random, man. If you talk shit about me, just come and have a fight with me. I'll wreck you. Andrew, he will wreck you. Andrew Tate. What do you think about Andrew Tate, guys? तेरे जिम में followers हैं Andrew Tate के. हर जिम में होते हैं आजकल. These guys are everywhere. Andrew Tate believers. शेयर करते रहते हैं उसका. हाँ. शॉर्ट्स. सारा टिकटॉक का उसका कचरा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता है. साइलेंस से लग रहा है you guys Andrew Tate fans? No. I find him entertaining though. Some, yeah. Just 1-2 कोई पॉइंट लेकिन हम He makes sense sometimes. And he talks a lot of nonsense as well. So here's the thing, if you talk like 100-point nonsense and just make sense in 2 of them, यही इनका USP होता है कि कुछ 100 बातें ऐसे बोल लो कि जिससे कंट्रोवर्सी हो और 2 बात ऐसे बोल लो कि yeah, sunlight is good for your skin, you know. You should get out, you should jog every day instead of staying at your fat ass on the couch. So he's entertaining, bro. He knows how to talk. So that's the only one part that I like about him, apart from whatever comes out from his mouth, that he can talk, bro. He knows how to hold your attention, capture your attention. और अभी तक जितने भी वो डिबेट्स में जाता है जीतता है उसमें परसेप्शन ऐसा बनाता है कि लाइक आई एम विनिंग दीज डिबेट्स. उसमें और कुछ नहीं है बस उसके इसके डिबेट करने के स्किल के ऊपर है. लाइक जिस तरह से वो बोल रहा है. He'll say like really outrageous things. Yeah. And then he'll make a really good point after saying the outrageous thing. He says good, well-researched examples. कि अच्छा अभी now if your girl is doing this, then this happens. You are like, हाँ ऐसा तो होता ही है. Yeah, girls are like that. You're right. उसका कहेगा yeah, so leave all women to kitchen. And then you'll be like, wait. Let's not go there. यहाँ कैसे आ गए? So yeah, I can understand why he appeals to the teenagers so much. क्योंकि उनका thinking थोड़ा सा reasoning skills अभी होता है ना. उनको first part पसंद आ गया. They're like, हाँ bro, भाई है. Andrew Tate का भी हमने पिछले बार breakdown किया था. कुछ जित्सु को गाली दे रहा था क्या? Just the worst thing was street fight. I agree. It's not the worst thing. Worst thing can be your kung fu. Yeah. और your nunchuck जिससे कि तेरे कोई पीट रहा है. Also, here's a question. In all the mixed martial arts, which one would you say you would put on top and which one would you put on down? With respect to every one of them. No, don't respect the bottom ones. just the top best ones. I would say if you really wanted to fight, you need wrestling and boxing. Yes. So you use your hands the most. You need to control a guy. Those are the 2 most important things. And let's add the third one. Jiu-jitsu. Exactly. Wrestling and grappling basically. 2 Grappling, things. You should know how to finish a fight without the use of strikes. Or you should know how to fight off your back. Because wrestling maybe it does not teach you to fight off your back. Yeah. And that's a very essential part of, because that makes you prepared for the worst case scenarios, if you think about it. But in street fights, I'm telling you, people say jiu-jitsu is useless. I mean, grappling is useless. That's a lie. Because you take a guy down, hold him. I know. Let's say you mount him and he doesn't know what to do. He feels so helpless. And you can do whatever you want. That's for 1 versus 1. Yeah, 1 versus 1. 1 versus 1, yeah. That's why the boxing comes in. I say that all the time. 1 versus 1, jiu-jitsu is the best. 1 versus, is that Reigns? That's some guy cleaning. Acha. Whereas boxing and other martial arts where you're standing up and fighting, especially not the kicks one, because kick marne where you get off balance, you fall, whatever happens, people rush you. Boxing, at least you can manage distance so well, and whoever manages distance in a street fight wins, or at least gets away. Street fights में I would suggest more, elbows and stuff. क्योंकि Headbutts and teeps. headbutts, teeps. Krav Maga. लेकिन elbows का problem है कि now you are going into the illegal territory जहाँ पे like you can get arrested very easily for cutting people up. Krav Maga. But people get scared and they see blood. Just grab the balls. Hurt them where they can't even complain to police about. Where does it hurt? Show me. Bro, legit मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा you are teaching the arm bar, but what if I start to bite your thigh? And I go, please try it, and after that don't expect to be alive. I'll be like, sorry bro,
Just So, recently also I was traveling, so I was at a place and we were training, right? So this guy is also, he does jiu-jitsu, so he's asking me a few questions. And he started asking me really dumb questions. He's like, what if I do this? What if I was like, bro, you asked me a question, so I give you the answer for this, and then you're putting hypothetical scenarios on top of it. yes. And I mean, I'm going to move accordingly, right? मैं स्ट्राइकिंग में खूब करता हूँ ये अनॉय करने के लिए गिरीश को जब भी वो सिखाता है ना तो जब भी मैंने वही वाइट बेल्ट इन एनी स्पोर्ट तेरे दिमाग में होता है ना व्हाई दिस व्हाट इफ दैट and you don't know how annoying it is for the instructor because he's telling you about a specific scenario कि अच्छा इस position में you can do this but if you ask completely कि अच्छा ठीक है now I've changed the position completely won't you get fucked up if I do this obviously you will but even I will adjust accordingly. So I have a student like he'll randomly message me at 1 a.m. 2 a.m. Coach, what about this technique, that technique? I blocked that guy. I blocked him from my phone. I was like, don't message me, please. Bro, students messaging you at weird times at night is the worst one. Because I think it is the rains, bro. Just check it once. Wait, make it go. Oh, Yeah, it is raining. Yes. Nice raining. Oh, trickle. That's good. That's good. We have food here, so don't worry. Oh, yes. तुम लोगों को भूख नहीं लग रही ना बहुत नहीं, ज़्यादा लग रही है I can see it in your faces. तुम्हारा word per minute कम हो गया and I understood. Alright guys, we'll quickly close it up. So we were talking about Dustin versus Justin just to finish it up. So you picked Dustin Poirier. Dustin. He's Everyone just way Dustin. too controlled, right? Last fight में मैंने देखा ये पिटता है फिर मुक्के मारता है, but that guy is always. Okay, I'll change it. Justin by leg kicks. Just for fun. I am going with Justin also. My mind is saying go with Dustin, but I want to just take a radical approach for no reason at all. क्योंकि अगर फिर मैं जीत गया फिर मैं at least तुम चाहोगे सब देखा. So always go against the grain, guys. Just be a rebel unnecessarily. So Justin Gaethje, he might win, bro. And if he wins, because I don't want to see again Dustin Poirier fighting for the belt, and even Justin also, to be honest. क्योंकि इन सारे लोगों ने कर लिया है. Who do you think is a good opponent for Islam? क्योंकि अभी जो top 3 पे हैं. I want Volk again. Volk, right? That will be. That's a the good man. fight. He's the man. But he's going to fight again first Charles and then again Dustin versus Justin में से कोई एक जीतेगा तो. अच्छा, here's a good question. This fight is for the BMF belt. Now, who is your top 3 most BMF fighter of all time? And BMF, for those who don't know, it's baddest mother effer. So top 3 people, fighters, all time. You can go as back. So if you really talk about the real BMFs, yeah, you have to give it to Nick Diaz. Nick Diaz, bro, that was on my list as well. Great job. Number 1. Khabib. So here's my definition of BMF. Okay, so BMF, when you're talking about the fighter, has to be a good fighter, great fighter also, but I also want a little bit of bad in him, right? Because the name literally says baddest motherfucker. Khabib and guys like Wonder Boy, all these guys are nicest motherfuckers. They are like Stipe Miocic. Like these guys are legendary fighters, but they are very nice. So we don't want to put them in BMF category. Because Khabib talks to you while pounding. That's Talks why to fights for his people. I deserve this, you know. Oh yeah. Why don't you tap? Why don't you tap to my Kimura? You must give up. I deserve this. You know I deserve John this. Jones. John Jones. That's a great Oh, one. John Jones, definitely. Who else? 3. We need 3. John Jones is the real BMF, bro. Like, No, he's the definition of BMF. Say he's the EMF. Evil. That's I a good like one. how he trash talked with DC. DC का तो उसने live bro रुला दिया था उसने उस बंदे को. That guy literally cried in front of the whole world because John Jones just tortured him so much. और उसके बाद में knockout भी मार दिया. Imagine Izzy actually fought John Jones. I'm sorry, Izzy. Izzy, bro, that would be the best day of my life. Because I hate Izzy, bro. I hate the kind of shit that he says. So who do you think is the real African? Duplessis or Izzy? Izzy को तो नहीं मानूंगा मैंने breakdown में किया था पिछली बार. Duplessis because he is born and brought up there and he is working there. He is doing MMA there. He is representing his people. While Israel has officially become a Chinese guy, he has officially become a Kiwi, and now he's trying to become African again. What do you think? The last guy won what? Duplessis. Duplessis, yeah. Duplessis is a real African. Good. But he can't say the N-word though, so what do you think? Real Africans don't say the N-word. Americans. You got it.
You got it. That's the correct response. Yes. Manish Mahanta. I don't know. Manish can just think about food right now. What about you, Joe? I would say if you stay in a country, yeah, you get to represent it more. I'd say Mike Perry is the real African. Oof. He says the N-word also. Mike Perry अभी तक relevant कैसे है, bro? He's fighting in bare knuckle fighting. Oh, dude. Still like he's in the conversation with the UFC guys, which is very rare. जैसे ही तुम UFC से बाहर जाते हो ना, the whole conversation you are out of it. Like Eddie Alvarez, all these guys, nobody knows about or cares about them anymore just because they left UFC. He's a character, right? So he's entertaining. Like if you, Eddie's a good fighter, but I don't care about Eddie outside the fight. अभी उसका और एलेक्स परेरा का एक कॉन्वर्सेशन आया था, देखा था? एलेक्स परेरा का नहीं, किसके साथ आया था? In which they were like कि we both beat up this guy. उसने who did he beat in UFC? Like a prominent name? Mike Perry. I don't know. One second. Mike Perry. उसने किसी एक prominent नाम को beat किया था, and this other guy was bonding over कि हाँ I softened him up for you. Oh, so yeah, we beat yeah. you up. देखा था? I heard something. Yeah, he's like, we beat this guy, and it's like, yeah, I softened him up. Yeah, that was a cool moment. Mike Perry किसने? Who has he Last beaten? fight. No. कोई ऐसा नाम है? Damn, Mike Perry has a really bad record. No wonder he's out of UFC, bro. Alright, so the third name, just to end this conversation here about the BMF, I think the third name I will include Amanda Nunes, bro. Yeah. She has been one of, and we usually ignore the female fighters whenever we make these lists, but she has been one of the baddest fighters in the UFC, like skill-wise, and also she's a baddie. We know that. She converted a whole girl to her team. So Amanda Nunes, third vote goes for her. तुम लोग का third vote किसको जाता है? Any fighter that you can remember? Nate Diaz, both can be on that list if you wanted to be. Definitely. Nick and Nate is the same. Yes, bro. Jorge Masvidal is proper BMF, bro. Like he has done shit outside the cage, inside the cage, through the press conference. He has done some bad shit. Yeah, he would be the third guy. That guy was there, no? Kimbo Kimbo Slice. Slice. Bro, the guy, him versus that Dada 8000 or something. Oh my god, that was worse than Ngannou versus Stipe. Black Beast. Acha, haan. Yes, Derek Lewis. And this guy. Izzy versus कौन था वो? Yoel Romero. Oh yeah, that one Like- also. All these fights. But I'd be scared to fight Yoel, someone like Yoel. Every sane person should be, bro. Like Yoel people say Romero. you kick him and your shin hurts. You punch him and your hand breaks. Guys made in Cuban test labs, bro. Dude is like 50 years old. Is he 50? He's old, dude. He's at least 40 plus, 42, 44, right? Plus, but not 50, I guess. No, he's not 50. I mean, like. Oh, that is the guy. That is the guy Mike Perry was talking with. Oh, And guess who they both beat? Luke Rockhold. Yes. That's why they were bonding over. A weird turn. This was all my plan. And Yoel was the first guy to give Izzy his L. Is he what? His first loss. When was that? The dance-off battle they had. Did they? So they were having a face-off, and then Izzy starts dancing, Huh. and then Yoel just does a backflip and split. Oh shit! I don't remember that. Izzy got owned. No, Izzy gets owned by everyone. Sean Strickland owned Izzy in the press conference when he was like, "Yeah, he has that cartoon porn addiction." Oh yeah. This guy's like, "No one's called hentai." Like a fucking baby, bro. उसके मुंह से जो भी निकलता है ना, super cringe shit निकलता है. That's why. अभी देखा जब ये fight खत्म हुआ DDP वाला, how he was staring at the other guy at DDP. He was like channeling all his rage like he's a cartoon character. He might be, bro. He lived in China so long, he's living that anime life. Alright guys, so I think guys, it was a great pleasure having you guys here. Thank you. We heard a lot of perspective about fights, about training, we made some fight predictions. I hope you guys enjoy your time here and take away some good knowledge that you can impart it back to your students over there, because I can see like a lot of talented fighters coming from your gym Hillside
in the future, and Assam in general has like a bright future in the sport of MMA, and you guys were the ones who started it all, and you're also carrying it forward. So good luck and good job on that. Thank you. All right, See you soon. see you soon guys. Next podcast. All right guys, good job. Thank you. Boom.